कर तू रहा बन जा फिजा, देख तेरी यादों में दम घुटते यहाँ। तू थी दवा अब है सजा, देख लंबी रातों से मैंने कली रजा। तेरे बिना मैं जीऊं बेमिसाल, गायक ने गीत बदलता है बुरा हाल। बिगड़े नवाब चुटता है कारोबार, आज भी ये दिल तेरे लिए मानदा निहार। कर तू रहा बन जा फिजा, देख तेरी यादों में दम घुटते यहाँ। तू थी दवा अब है सजा, देख लंबी रातों से मैंने कली रजा। तेरे जाल में आज किए मैंने कितने कमाल वे, यहाँ जीते हम बढ़कर थोड़े से मर कर लिखी जिंदगानी एक साल में। आज चल मेरे मन में और मन जा मुसाफिर, तुझे हार के मुझे जीत हुई हासिल। खुशी मेरे मन में और दिल भी है काबिल, दितानी में फक और वो कहते हैं शातिर। यहाँ लोग पीठ पीछे करे वार, ये ले तानी लोर जो साथ परिवार है। आज तेनू वे के हो गए 2 साल, ये वेखदा में तस्वीर और जुल्फ़े कमाल के। कहते हैं जैसे करनी वैसे ही भरनी, चाहिए सब मुझे काल में होती है ज़बरनी। कर तू रहा बन जा फिजा, देख तेरी यादों में दम घुटते यहाँ। तू थी दवा अब है सजा, देख लंबी रातों से मैंने कली रजा। तेरे बिना मैं जीऊं बेमिसाल, गायक ने गीत बदलता है बुरा हाल। बिगड़े नवाब चिट्टा है कारोबार, आज भी ये दिल तेरे लिए मानदा निहार। कैसे हो गाइस, कैसे हो सब लोग? व्हाट्स अप हे सुजल जावे आया बड़ा सब गाइस। अरे हेलो, वाओ, हाउ डू आई स्टॉप दिस डांस? स्टॉप डांस, हेलो, हाँ चलो। What's up दिवांशु आई? सब बाइक तो अपनी होगी नहीं, यहाँ पे मंगा लेते हैं। बराबर दिव्यांशु भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल चाल है? वो भाई थोड़ी आवाज़ कर लेते हैं। रेडियो ज्वाइन कर लेते हैं। यार मम्मी भाई 1 मिनट रुको। हेलो मेला नो पिक्सल खेलोगे? आज नहीं कोर्ट केस है गाइस, कोर्ट केस। वो पहले इनको में से डाल देते हैं जरा।
भाई अनोखा तो होगा ही नहीं। अब लॉयर को किसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए? लॉयर तो है नहीं अपना। लॉयर, प्राइवेट लॉयर इन द सिटी, माइक स्पेंसर, स्पेक्टर, बराबर। सिटी हॉल चल के देखते हैं। आओ गाइस। हेलो गाइस, रेडी चेक। ठीक ठीक। गाइस कोर्ट केस है मेरा। चेक करा क्या था? वैसे कितने बजे हैं? हेलो, अभी है। यस। हेलो, अरे मैं जरा कोर्ट आया हूँ, रुक जा। कोर्ट केस के क्या चक्कर नाम में देखने? रुक जा, पहन रुक के जा। आओ मित्र, नहीं तो उसमें भगा मेरे को देंगे भी इधर। बुलाया गया इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ, तुम्हें बुलाया गया ना, आ जाओ ना। फिर फॉर्मल्स पहन लो और आ जाओ। फॉर्मल्स क्यों पहनूं? फॉर्म मैं ऐसे ही आऊंगी जैसे हूँ। आप अगर आप ऐसे आओगे तो आपको कोर्ट से बाहर कर दिए जाओगे। आप अगर आपको नहीं पता, हम तो विटनेस हैं ना। डजेंट मैटर। फॉर्मल्स में आना है सबको, कंपलसरी है, लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। अच्छा ठीक है। नहीं, मत आओ मत आओ, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। मैं बोल दूंगा, हाँ हाँ मुस्तानी जी है हाँ ही भाई नहीं। भाई। आगे के हाँ चार्जेस अपने भाई आप भाई। संभाल लेना ना अपने। नहीं नहीं, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। हाँ, मेरे ऊपर कौन सा चार्ज? मैं तो अपनी बंद हो सजा जाओगी काट के आई हूँ यार। जिंदगी भर के लिए, अंदर हो मैं अपनी जाओगी। सजा मैं अपनी सजा काट के आई हूँ, स्टिल ठीक है ना? अंदर हो जाओगी। बकवास नहीं। कहाँ मिलना है? चलो आओ, लोकेशन भेज देना बस। मेरा आ ट्विटर जाओ चेक करो, ट्वीट आ चेक करो जाओ। मेरा। कोर्ट हाउस, सिया। गाइस, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? कोर्ट केस वेस हो रहे हैं। with my babe वाला What? गुमशुदा तलाश अगर कोई इस पहन सकते के? नीले दाढ़ी वाले पहन तो को सकते हैं शायद ढूंढता से, है तो उसको लेकिन थोड़े इनाम अच्छे से पहन मिलेगा लेते हैं। 10,000 डॉलर्स का। ये क्या चल रही है यार पीछे? बेब है बाबू लोहार। गाइस, तुम्हें आवाज़ आ रही है सब लोगों की अच्छे से? यार रुको, मैं आवाज़ बढ़ा देता हूँ। कौन है? बढ़ा दी, फुल कर दी भाई। अब हमारी एक दोस्त है, रिप्लाई नहीं दिया उसने यार। कॉल करूँ क्या उसका नंबर? लाइन पे आ गए लॉल। यार ये चार्जेस बाबू का भाई काम क्या है नाम सुन इसका के यार? वही इसको ना, साड़े को निकालो। ऐसा क्या कर दिया? कोर्ट के बार चक्कर में काट मिला। रहा। भाई क्या ही बता है हम, अभी तुम्हें पता लग जाएगा गाइस सबको। दोस्त सब के सब सांप भरे पड़े हैं ना। बढ़िया बढ़िया। दोस्त मेरे सब सारे सांप हैं। रब ने बना दी जोड़ी, नल्ले नल्ले की। अपने ही तो सांप होते हैं भाई। ये पार्टी वेयर नहीं लग रहा? उठा दे क्या? क्या बोलते वैसे अच्छा लग रहा है, ये पहन नहीं सकते यार, हैं। उठा दो जैसे पहले बिठाया था। लोग ज़रा चेंज कर लेते हैं ग्लोव्स व्लोव्स थोड़ा। हाँ, हो गया ना सिस्टम सेट। इसका थोड़ा जैकेट चेंज करते हैं। बराबर बराबर। भाई लोफर्स ही नहीं है क्या? लोफर्स आगे होते थे, ब्राउन वाले। ये रे भाई, क्या कितनी बैंड लग रही है। छी भाई, छी भाई। पैंट चेंज, पैंट चेंज, पैंट चेंज करना चाहूँगा। माय बॉडी का पैंट है। इसके नीचे की तो पैंट है शायद से। हाँ, लोफर्स नहीं, फिर जूते चेंज करते हैं गाइस। हेलमेट सूट कर रहा है स्ट्रेंजली। बराबर बराबर। हेलमेट तो हमेशा से ही सूट करता है भाई। क्या हो गया तुम्हें? हम पे हेलमेट सूट नहीं करेगा तो किस पे करेगा? ये पहन सकते हैं ना, इसमें वाइट भी होगा एक। नहीं है क्या वाइट? नहीं भाई, पार्टी वेयर लग रहा है माँ कसम।
गाइस, क्या तुम्हें भी पार्टी वेयर लग रही है? तो बता दो अभी कि अभी चेंज कर लेते हैं। नीचे पहनेंगे यही बस, ठीक है। पार्टी वेयर लग रहा है क्या गाइस? नहीं ना, फॉर्मल लग रहे हैं ना बिल्कुल। चलो, मेरे पास कैश नहीं होगा, पक्की बात है। फॉर्मल्स है कैश है। बैग उतारना पड़ेगा। गंदा ड्रेसिंग भाई। ये पहन ले, ये अबे ये क्या बना हुआ है पीछे? व्हाट्सअप फेस, व्हाट्सअप, वेलकम टू द स्ट्रीम। आ गया। अबे यार पैंट्स कहाँ हैं? भाग। ठीक है भाई, ठीक है भाई। यही पहनना है अपन को। ब्लैक का है इसमें? ओह माय गॉड, इसमें ब्लैक ही नहीं है। ओह माय गॉड भाई, पैंट का है भाई ये। हाँ, इसमें लोफर सही रह गए हैं। भाई नंबर ही सेव कर लेता भाई लोफर्स का। भाई क्या यार, ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। अंडर शर्ट चेंज मारो फटाफट से, चलते हैं फिर। अरे भाई, कपड़े मिल जाएंगे आज के दिन में? हाँ मिल गए। गॉड, ब्लैक ही पहन लेते हैं गाइस, कोई नहीं। फॉर्मल्स टू, चलो गाइस। क्या केस हो रहा पता नहीं भाई, आओ। लोकेशन दे दो एंड अरे बोलना सिटी क्या है हॉल मुझे। की लोकेशन नहीं अच्छा पता ओके ओके। तुम्हें? सिटी हॉल बोलो ना, ये मुझे नहीं पता था। कोर्ट हाउस बोला सिटी तुमने। हॉल, अच्छा कोर्ट वो छोड़ो। हाउस। अच्छा ओके, ये बताओ हाँ बोलना क्या जी। है। क्या बोलने का क्या मतलब है, पता नहीं, लॉयर से तो मिला ही नहीं मैं अभी तक, मिलने जा रहा हूँ लॉयर से। हे भगवान। 10 बजे बुलाया ठीक है, मैं है, चुप जल्दी आ रहूंगी। जाओ। ठीक है, आ रही हूँ। हाँ भाई, देसी भाई आ गए तुम? ठीक आ रही है। ये कौन है भाई? कैसे हो बे आती आ गए? अबे वो चेक आ करके मेरे अंदर भेजो, अंदर आओ बे, इधर सब हैं? पागल। तुम्हारा केस है ऑफिसर। और तुम ये बैग लेकर क्या रहे हो? तो यार बैग, क्या बैग कंपल्सरी, क्या बैग बैग हटाना है क्या? मतलब बैग छोड़ के आऊँगा, घर छोड़ के आऊँ? बैग तो बैग होता है ना, काम होता है बैग में, सामान रखते हैं क्या बैग में? आओ। अरे लॉयर का है हमारे, लॉयर से तो मिला दो हमारे को, लॉयर ही नहीं पता अभी तक कौन है। चेकिंग करो, पता नहीं। लॉयर तो वो थी। अरे लॉयर को बुला दो सर हमारे ना, आपके पास होगा ना रेडियो वीडियो लॉयर वायर का, जरा उनको बुला दो यार, उनको बोलो जरा शिनोय फ्रॉस्टर आए हैं, बात कर ले एक बार आके। ऑफिसर आपसे बोल रहा हूँ मैं, दोस्त। सुन रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता, भी आइडिया नहीं। भाई क्या ऑफिसर है। ऑल मोटू कैसे हो? ऑफिसर जरा लॉयर को बुला दीजिए कोई।
हेलो कैसे हो? ए वारूस कोर्ट केस कभी है? बढ़िया बढ़िया, आओ इधर आओ। 10 बजे बस 10 एक बजे 10 मिनट बजे। एक मिनट एक ए ये मिनट। कहाँ लगाओ यार, चोरी कर लेंगे, अंदर लगाओ क्या? हाँ, मत ऑफिसर, लगाओ इसको, मत आओ। लगाओ, चोरी कर लेंगे। अंदर मत लगाओ बे। अरे अंदर डाल दूं क्या मैं? सुनता ही नहीं है बात को माल भाई। में तो चलता ना रे। वो अपने में ही लगा हुआ है। हटो बे। कहाँ होते लॉयर? लॉबी। अरे लॉयर कहाँ होते हैं? ऑफिस 4 यहाँ होते हैं। है ही नहीं कोई लॉयर। अरे 1.0 के बाद आज भाई मैं पीछे भी आया था लाइव यार, तुम आते ही नहीं यार उस्मान भाई, यार क्या यार। पार्किंग अरे बोले तो जरा अपना लॉयर फिर ये जो लोग की अरे जल्दी मेरा है उनके पर्सनल लिए गाड़ी फायर नहीं है एक्सटिंग्विशर। ये। आपने खरीदी नहीं है इसको? so much नहीं Piyush, नहीं नहीं, मेरे thank को दिया है। you. आयुषी, को आरुषि, ओए Thank you. गाइस तुम्हें मेरी आवाज आ रही यूस है? भाई सख्त आ मार रही दिया। है, हाँ, बोलो अरे ना आपको कि इग्नोर मार किस रहे थे लिए सर कर रहे थोड़ा। हो? मारूंगा ये सब बैग पता लेकर नहीं। के आए हो, बड़े मनुष्य से लग रहे हो, जाओ चेंज कर दियो। बैग तुम में इससे सामान बात रख करो के यार, तुम्हें बैग दूंगा चेंज ना। करके आओ बैग यार। अरे हाँ। बैग में सामान रख के तुम्हें दूंगा, जरा भी अपने पास रख लेना। चलो आ जाओ, हो गया मेरा काम अब मेरे से। क्या भाई दे ये दिया नया मेरे बैग को? कहाँ से मिला यार? कुछ नहीं दिया मैंने तेरे को अभी तक। ये पीयूष दे रहा है, पता नहीं कौन है ये। हैं, तुम्हें नहीं दिया बे। ए तुम इससे बताए कौन हूँ मैं? रुको। हेलो कौन हो बे? छोटे बच्चे हो, बजू मत। हेलो? ज्यादा बज रही है। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ हेलो? रही। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? This is Officer Jake Williams. I'm sir. actually at the city hall. The judge is actually asking about your presence. किधर हो आप? सर मैं सिटी हॉल के बाहर ही खड़ा हूँ, आप कहाँ पे हो? All right. Okay. मैं अंदर हूँ. I'll come and help you. ठीक है. या शिनोय, किसके साथ है तुम्हारा? किसके साथ किसके है? साथ? क्या साथ है? केस रुक जा। केस आयुषी का है? इधर आ, आयुषी इधर आ, आयुषी इधर आ, मैं, दिया। मेरा नाम भी नहीं, नाम आरुषि भी इधर नहीं आ, पहले इधर आ। बोलो ना। आरुषि पटेल, मेरे को तेरा पूरा नाम पता है। ये ले एक बारी मेरे से, ठीक है? अभी के लिए ये पकड़ ले, ठीक है? और ये जो बैग है ना, ये भी पकड़ ले जरा, मैं तेरे से ले लूँगा बाद में। हेलो। आओ यार, अंदर आओ, अंदर आओ, सीन हो गए। हेलो ऑफिसर। हाँ, आपके लॉयर आ गए सर? सर लॉयर का तो मतलब थोड़ा चेंज हो गया था। वो दूसरे लॉयर जो है, मैं उनका वेट कर, आई मतलब ना उनको मिल नहीं रहे हैं, मेरे को उनका नंबर how are नहीं है। you? आप जरा अपने उनके रेडियो पे जाके उनको बुला सकते हैं, लॉयर वाले को? आपका लॉयर का नाम? सर वो नाम ही तो नहीं पता ना मेरे को, ईमेल पता है बस सर का। उनसे बात हो गई है थोड़ी सी। तुम्हें तुम्हारे लॉयर का नाम नहीं पता? अरे my जो God. लॉयर थे वो चेंज हो गए हैं, अभी जो नया लॉयर है उनका नाम नहीं पता मेरे को, क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं हूँ। लेकिन उनका मेल आया था मेरे को कि मेरे से मिल लेना, तो मैं उनको ट्राई कर रहा हूँ कांटेक्ट करने की, ढूंढने की, मेरे को नहीं मिल रहे वो। अच्छा, so basically हमारा लॉयर नहीं है सर, मतलब लॉयर तो है। नहीं है, नहीं है। बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि होपफुली यू हैव अ लॉयर। हाँ मतलब सर होगा ना, मतलब अरे मतलब इन द सेंस कि यार रुको मैं लॉयर देख ही लेता हूँ यार, कहाँ है यार मेरा लॉयर। अब मेरे को आई एम नॉट श्योर कि यही लॉयर है कि नहीं है। लेट मी कांटेक्ट हिम। ओह माय गॉड, ये तो नहीं मिल तो मतलब सर आप अपने रेडियो वीडियो से जरा कैसे हो? उनके रेडियो पे कनेक्ट तुम्हारी ऊपर वाले खीसे में देख सकते फोटो है हैं मेरे अभी। लॉयर कहाँ है हमारे। एक सेकंड जज सर। Yeah. हेलो This सर। is actually Shenoy Okay. and यही है केस करा आपने। complicated life is he knows who his lawyer is but he does not know who his lawyer is. Sir, actually, I will tell you. Very nice gameplay. My lawyer's name was Anokha Wilson. He is unable to come, I guess. So he told me to contact some, like he gave me the email of another lawyer. Yes, I know So, exactly our situation. yeah, so I don't know where he is and I haven't met him. So yeah, that's the point. All right, no worries. You guys can come into my chamber. So let's. Yeah. have a One talk. second, I'll just have to quickly search these people. Yeah. Oh yeah. I'll be searching. राशि को Yeah, जाओ। Bring just him give me a into my second. chambers. अरे Just give me a ये कैप्टन सर, आरुषि इधर आ, आरुषि ये भी ले। ये अनोखा देख विल्सन रहे हो ये सर? देखो मेरे को सारा सर, सामान देख दे रहे रहा हो? है। डिफेंडर है। दुनिया में बहुत नाम कर आपके ऑफिसर से थोड़ा ऐसे जोर से गले तो फिर ये गले इसके से साइड पकड़े कैसे खेल हुए रहा है? हैं। ये शिनोय आपके तो सामने ही। शिनोय सर आप सिविलियन ओनर है? चिलबुर सर। हाँ, सर, Mr. बिल्कुल। Shenoy, I'll be taking your flashlight from you for now. Yeah, I'll yeah, duty यहाँ after पे that. यहाँ पे बोलो बोलो। cool, cool.
You have बोलो 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 nothing बोलो else that is harmful. ठीक है. अकीरा कैसे All है? right. yeah. अरे मैं अकीरा को आपने तो मिला बात You नहीं can करी। step in. नहीं मैं मिला Alright. उसको उसको जाना था Just ना give me a second. तो उसने मेरे को बताया ऐसे Ma'am, can I चीजें, search you? तो अभी अपन कल मीटिंग करेंगे जेक को लेना है लॉयर रुक जा अभी बोलता हूँ आप कौन सर? हेलो सर मेरा नाम है शनोय फ्रॉस्टर अच्छा आप कौन? सर मेरे ऊपर केस हुआ है ना ओके ओके हाँ जी मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन यस चलो आ जाओ यस फॉलो हाँ मी. जी सर जेक विलियम सर सर हाँ, मेरे को बोलो. ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है मेरी लॉयर का नाम लीना है मतलब हाँ लॉयर लीना हाँ It's okay. We'll feel bad to. Wait, I'll give you one mic. Wait. I brought it. I'll give. आ जाओ Shenoy. The judge wants to talk to you. मैं in the मेगाफोन chamber. लेके आया ठीक है जज के लिए. आ जाओ जज सर. Where is the second accused? She pleaded guilty, right? Yeah, she pled guilty. He's the only accused in this case scenario. But He's a witness. she's the witness as well. Yeah, right? she's there, but yeah, she's there. Yeah. All right. So, Mr. Shenoy, if your lawyer is not here, you can do one thing. You can defend yourself. Okay, if you feel comfortable doing that, you can bring up any arguments or counter any arguments however you like. Okay, but you have to Mic prove check. your innocence as well. All right. So you have to be like very professional in that way. You know what I mean? Like Yeah, you cannot violate any court terms. You can ask one question at a time with police officer. You cannot badger any witness. You cannot violate any terms of court. All right. So Jake will basically tell you the basic terms. All right. So he will assist you if you want with the basic terms. That's it. Like about the protocols, like how we're gonna move forward. Okay. And see, basically what happens is first you guys will give your opening statement, then you guys will call your witnesses, present evidences, and all that. Okay. All right. Then we'll come to a verdict. After closing statements, of course. Can I talk to my witness for like 2 minutes? Do you have a witness list? Can just email it to me. Yeah, she's the I have only one witness, that is Diwani Mastani. She's already in the witness. Mastani Obra, right? Yeah. Did you had a talk with your new lawyer or? Yeah, he contacted me, emailed me. So we had a talk. So he said that he will be there. Now I can't see him here. So Yeah. I mean, don't worry. I will take action if he's not here. But if he is not here eventually, then I'm we are gonna move forward anyways. So you can defend yourself. Okay? All right. Jake का दर्द समझ रहे हो? सर अपने को ही मारने में अलग मजा है सर. Sir, can I come in? Yeah. ठीक है सर. तो मैं जरा अपने विटनेस से बात करके आता हूँ. Sure. We'll begin in 5 minutes then. All right. Yeah. बताओ चुलबुल सर. विटनेस इधर आओ. विटनेस यही इधर. विटनेस से नाम को है गुमराह जिन्हें ओ बैग दे रहे हो तो अब देख मेरी बात सुन. लॉयर तो है नहीं, तो उन्होंने बोला तुम्हें खुद को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो मैं खुद को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. ठीक है. अभी तू मेरी बात सुन. तेरे को क्या बोलना है? ठीक है. देख वो दादी वाली कहानी सही थी तेरे हिसाब से? हाँ, अरे देख सुन. हाँ ठीक है. अंदर ऑलरेडी चोर थे. ठीक है. हमें बुलाया गया था काम करने के लिए. नहीं, हमें बुलाया गया था माइक्रोवेव ठीक करवाने के लिए. माइक्रोवेव ठीक. हाँ ठीक है. हाँ. और हमने प्लीड गिल्टी इसलिए किया. मैंने प्लीड गिल्टी इसलिए किया क्योंकि मेरे सर में चोट लग गई थी और मेरे में हिम्मत थी नहीं कि मैं पीडी वालों से बैठ के बहस कर सके. ठीक है, फाइन. बहस कर सकूं. तो मैं सोची कि मैं अंदर लॉकअप में जाके ही सो जाऊं. ठीक है. अभी मेरी बात सुन. तेरे को क्या बोलना है मेरी बात सुन. अब अगर वो ये पूछते हैं तेरे से कि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, तो तेरे को ये बोलना है कि शेनॉय के साथ में घूम रही थी. इसको इसकी दादी का फ़ोन आता है. हम लोग वो घर में जाते हैं इनकी दादी के. ठीक है. पर दादी थी, पर तो नहीं मतलब कज़न दादी. मैं बोल दूंगा. ठीक है. तू बस ये बोलियो दादी का फ़ोन आता है. हम उनके घर में जाते हैं. अंदर जाके देखते हैं अंदर 2 चोर होते हैं. तो हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए, हमारी पास अपना सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग जब अंदर जाके देखते हैं तो वो लोग ऑलरेडी दादी को मार रहे होते हैं. ठीक है. तो हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपना उस टाइम पे फ्लैशलाइट निकालते हैं अपनी सेफ्टी के लिए. ठीक है. एंड अपने से निकालते हैं हम. टॉर्च निकालते हैं अंधेरे में. क्या हो रहा है. अंधेरे में कि क्या हो रहा है. हाँ ठीक है. उसके बाद फिर
हम लोग जब देखते हैं तो वो दादी को मार रहे होते हैं, तो हम हाँ, तो जैसे उसी ही टॉर्च से उनको मारने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, हाँ मतलब नहीं, उस टाइम पे फिर हम मतलब लोग उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनको मारते बचाने नहीं, की कोशिश, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हमने फिर माइक्रोवेव कब उठाया? अब माइक्रोवेव हम उठा के मैकेनिक के पास तो लेके जा, पहले ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग अंदर गए थे, अंदर कोई नहीं माइक्रोवेव था। नहीं था हम पे। माइक्रोवेव नहीं था था मेरे पे, मेरे पे था। मिला है क्या हाँ उनको? हाँ हाँ हाँ। अरे तू बोल देना कि मैं माइक्रोवेव उठा लिया था। मैं ये बोलूँगा, मैं हम लोग अंदर गए थे, सुन मेरी बात, अब हम ये बोलने वाले हैं, हम लोग अंदर गए, ठीक है, माइक्रोवेव उठाया दूसरे उसके रूम बाद में, हम लोगों ने दूसरे माइक्रोवेव कमरे में, उठाया, हमें लगा दादी सो रही होंगी, दूसरे कमरे में जाके किचन से चेक करने गए। उठाया। हाँ, दूसरे कमरे में जाके चेक करने गए तो देखा तो वो दादी को मार रहे थे, ठीक है, मार चुके थे और छुपने की कोशिश कर छुपने रहे की थे, तो कोशिश कर हमने रहे थे, उनको ठीक है पकड़ चलो। लिया। हाँ, हमने उनको पकड़ा तो हम गेट की तरफ भागने लगे, वो वो हम हमारे पे पीछे ही भागने लगे, एंड उन्होंने जैसे ही मैं गेट के बाहर जाने से पहले ही मेरे को डाउन कर दिया, एंड तेरे को भी एक चाकू मारा उन्होंने, ठीक है, तब तेरे को चोट लगी। तो मैं तुम्हें लेके बचा के भागने लगी फिर क्योंकि तुम बाद में बेहोश तो थे और हाँ मुझे भी हाँ चाकू लगी थी, तो मैं भी बेहोश हो गई। हाँ, ठीक है। और वो मैं बोलेंगे, इतनी अगर गिल्टी अगर वो ये इसलिए बोलेंगे थी कि तुम भाग क्यों रहे थे, तो तेरे को वही और सुनो, रिप्लाई मेरे देना पास है से तेरे को। फिटबिट मिला। ठीक है। हाँ, तो और मैंने फिटबिट, बोला अबे कि वो मैं फिटबिट, सुबह सुबह जॉगिंग पे जाती हूँ, हाँ तो तो फिटबिट तो मैं वो पहन के जाती लीगल है, फिटबिट चल मार, लीगल है वो, उसकी कोई हूँ। तो पूछेगा ही नहीं। इन्होंने लिया क्यों? ले लिया था उन्होंने, पागल है वो छोड़, हाँ। फिर मेरी बात सुन, अभी मेरी बात सुनिए, कि अगर वो ये बोलते हैं कि तुम भागी क्यों फिर पैनिक करके, तो तू बोलियो कि सर मेरे को डर लग रहा था उस टाइम पे मेरे पास, तो ये बात बोलियो कि सर मैं ब्लीड हो रही थी एंड मेरे को डर लग रहा था, एंड उस टाइम पे मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ऑफिसर से खड़े होकर बात कर सकूं, इसलिए मैं हाँ, फटाफट खुद से पिल बचाना बॉक्स था। की तरफ जाने लग रही थी, ठीक है, मैं थोड़ा लंबा रास्ता ले लिया था, वो मेरे वो पैनिक मोड में ऐसा हो गया था मेरे से, ठीक है। ठीक है। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। कैसे में? हैं? ये किसकी आवाज़ आ रही है? अच्छा छोड़, हाँ चल आजा। मेरा क्या है, हमको जाना पड़ सकता है, तो तुम बीच में देखो, ठीक है? हग मत दियो, हाँ, बस हाँ, तेरे पे मेरा फोन चेक पूरा वो है विश्वास, ठीक है ना? चलो चलो। हाँ आओ आओ अंदर पता है आओ। ना मैं कौन हूँ। हाँ हाँ ऑलराइट ऑलराइट। अरे बाप ऐसा लग रहा केस जीत गया पहले। पर कुछ किया ही नहीं। वकील है ही नहीं, खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा तूने वो गले का वो निकाला नहीं, ये रॉड निकाल रहे, कैसा चल? आपको वकील मिले नहीं क्या? सर अनोखा वकील मिला था, अनोखा वकील था सर, सर, वो यहाँ वकील वकील के साथ के- में कुछ इशू हो गया, वो वकील नहीं आ पाएंगे, दूसरे अरे उसकी वकील भी माँ नहीं 10 आ बजे के पाएंगे, बाद आने नहीं और देती। उसके बाद अब दिक्कत यही हो गई है, तो खुद परेशान हो लड़ो गया हूँ मैं। और हारो, मतलब जीतो। लॉयर नहीं आ रहा इनका? सर मेरे को खुद जज लड़ना सर से खुद बात लड़ना करनी चाहिए। पड़ेगी, वर्डिक्ट क्या है मतलब? वर्डिक्ट वो केस के बाद ही पता लगेगा। अरे मतलब एक सेकंड रुको सर, मेरे पास एक सर मेरे को कंफ्यूजन था सर, मैं आपसे हाँ, हाँ। अकेले में बात कर सकता हूँ थोड़ा साइड में? आ जाओ इट्स ओके करने दो, वो मत बोलो ये सब, वो जज के ऊपर है। सर फॉर एग्जांपल आई लॉस्ट द केस, ओके, so what will be the the next step after that? See, if you're found guilty of any charges, then the jail Uh-huh. time and fine will be decided by me. Okay. And yeah, we'll see upon that, upon the verdict. all right and इसके आगे तो hearings और भी हो सकते हैं, right? अगर No. नहीं, okay, तो this will be like the final one. Yes, it will be the all final right. verdict. Yeah. ठीक है सर, ठीक है। Have you prepared a defense? हाँ सर मैंने किया तो है थोड़ा सा। All right, ठीक है। I wish you luck. Yeah, thank you sir। भाई मरे भाई, आज तो खत्म हो जाएंगे भाई, भाई तोड़े जाएंगे बहुत ज्यादा भाई, हेलो तोड़े जाएंगे भाई आज भाई, कसम। हाँ जी सर, हो गए। क्या हुआ था? आउट हंस ऑफ क्यों रहे हो सर? क्यूरियोसिटी आई वांट टू आस्क यू समथिंग। हाँ जी सर पूछो। अच्छी वाली लस्सी दो ना, दे रहे हो तो। कितने % लगता है तुम जीतोगे? 0.5। देखो सर, यार खुद पे विश्वास होना चाहिए, 90% जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आओ सारा पीडी को हराएंगे हम अकेले, देखो तुम। तेरे तो स्टेट के खिलाफ है ना रे, पीडी के खिलाफ। अरे मतलब स्टेट को हराएंगे, स्टेट को। Shulu, I think we can Yeah, we begin can because start the other lawyer might be not be coming up even anyway. So let's begin now. All right, so what माँ frequency, sir? कसम। It will be a one-way radio, and Yep. I guess
which one we used last time? 11.15, right? 11.15 मैं क्या बोल रहा हूँ? Yeah, let's just use 11.15 then. पानी दिमाग में है। 11.15, yeah. खाना पीना है ना? ये लेके आए देखो। वो ले। Guys, रेडियो चेक। radio frequency is 11.15. Working. ये one way radio है, ठीक है? कितना बोला जैक सर? सर मैं तो बोल सकता हूँ ना रेडियो पे? Will be switching to radio. जब तक परमिशन अच्छा अच्छा ठीक बोला है जाएगा तब। तभी ओके ओके फाइन 15 आपको सर्च किया है ना मैडम? नहीं। हेलो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैडम। कौन से हैं? आप सर्च किए क्या मैडम? अरे सर बोलने दो ना यार, कभी तो इंग्लिश। नहीं। मुझे 2 बार सर्च बारूद सर थैंक यू कर क्या रहे हो इधर गले लग रहे हो मैडम क्या? अरे यार वो भाई अभी बोला था मेरे को कि वो सर मतलब है अरे क्या बोला था? अरे भूल गया मैं। क्या बोला था? हाँ इसका मतलब क्या होता है? क्या दे रहे हो मुझे? O7 Officer लिख Pandey, देते अपने लिए kindly have decorum in the court. Last and final. Alright guys, just maintain discipline. Just give me a second, guys. खड़े रहो अरे जज बाद में बैठो। You all can be seated. अच्छा नहीं पता मेरे को। Am I audible? Yes, sir. 11.15 पे सेट कर लो। Alright, so we are here for State versus Shenoy Froster on the charges of कर दिया। burglary, possession of items used in the commission of a crime, false reporting, possession of a controlled substance class B. These are the charges on Mr. Shenoy Froster. Prosecution and defense, you guys can begin with the opening statement. Prosecution, you can go first. Thank you, Your Honor. I'll just start off with my opening statement. So, Your Honor, the thing is, as of, you can say 2023, there are over 8 billion people across the entire globe. And in those 8 billion people, there are countless number of people who are great storytellers. And there are countless number of people who can play with emotions really well. The thing is, here in Los Santos, oh my god, by the law, we don't work by stories, we don't work by emotions, we work by the law. We do hear the stories out and we feel the emotions because we are human beings. But our decisions eventually come out to what the crimes have been committed and to what the law has as the crimes. So today we are here to show and to prove with valid evidences that Shenoy Froster has actually committed the aforementioned crimes that were burglary, possession of items used in the commission of a crime, false reporting, and possession of controlled substance class B. And with the increasing crime rate in the city, and after showing all these evidences, I would request Your Honor that he would eventually get this due actions that you recommend. And by this, Your Honor, I end my opening statement. Thank you. Alright, Mr. Shenoy, your opening statement. थैंक यू योर ऑनर। सर मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि मैंने एज सच ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है। Alright, Shenoy, repeat after me. Yeah. You're swearing on the Constitution of Los Santos. I'm swearing on the Constitution of Los Santos. That whatever you say. By whatever I say. Will be only the truth and nothing but the truth. Will be only the truth and nothing but only the truth. Yeah, you guys can begin. Yes, sir. Alright, so Mr. Shenoy. Just before we begin, Mr. Shenoy, if you have any objections regarding his questioning, a valid objection, you can raise that objection if you have any, okay? Alright, sir. You guys can continue, yeah. Alright, Mr. Shenoy, as of 2 days ago, that was the 17th of January, you were caught at Grove Street. Can you please tell the court what exactly were you doing at Grove Street and can you explain the situation out there? Alright. So, sir, actually, on the Grove Street, it's my cousin Dadi's house. So, मैं and Mastani
हम दोनों घूम रहे थे एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर दैट कि उनका ना माइक्रोवेव ख़राब हो गया है. सो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है आप, मैं आपके घर पे आ जाता हूँ. सो मैं उनके घर गया था वही चेक करने के लिए कि उनके माइक्रोवेव में क्या हुआ है. Alright, I want the court to get on record that Shenoy has said that it was his dadi's house that is currently present at Glue Street. So Shenoy, जब आप आपकी दादी के घर के अंदर घुसे, first I would like to know how did you manage to enter her house? Sir, I knocked the bell. And I ring the bell. I mean. You rang the bell, okay. And did your dadi come and open the door for you? Yeah, she did. Okay. I would like the court to know further that his grandmother did come and open the door personally for him. Was Miss Mastani Oberoi with you at that same point in time? She was in the car. Yeah. No, Mastani, you don't have to mention right now. You're not on the stand. जब आपको बुलाया जाएगा तब you'll have to mention. All right. So Shenoy, as soon as you entered the house, what were the incidents that took place inside the house? So I saw her moving towards her bedroom, and she just showed me the microwave that needs to be picked up and get it repaired. That's what she told me to do. So I went inside the kitchen. I saw her microwave. I took her microwave, and then I hear a noise from her bedroom. So at that point of time, I asked Mustani to come in the house, and she was with me. We both entered the bedroom, and we could see two people there who were hurting my dadi. So at that point of time, okay, hold on. I would like your honor to just point out one thing. After he noticed some sounds inside the room, then he asked Mastani to come inside the house. I would like that to be on the record. Yeah, go ahead, Shenoy. You can complete. Yeah. After that, जब हम अंदर देखे हमने कि अंदर दो लोग जो थे वो मेरी दादी को मार रहे थे, लिटरली मार रहे थे. They were killing her. तो उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं Mr. Shenoy, were they killing her or they were beating her up? Like there's a huge difference. Just to clarify. They were having something in their hand, like I guess it was a knife, as far as I remember. All right. So what happened was उस टाइम पे घर की लाइट भी ज़्यादा नहीं जल रही थी, बहुत डिम लाइट्स थी. तो मैंने अपनी टॉर्च निकाल के मैं ध्यान से देखने लगा कि हो क्या रहा है. एंड आई कुड सी टू पीपल इनसाइड अ बेडरूम एंड दे वर लाइक हर्टिंग हर, दे वर स्टैबिंग हर बेसिकली. तो मैं और मस्तानी पैनिक हो गए थे उस टाइम पे. तो हम लोग उधर ही जो क्या कहते हैं घर का जो सिक्योरिटी का जो वो होता है उस पर जा करके मैंने रिंग कर दिया था सो दैट पुलिस कैन कम इन. एंड हम लोग जैसे ही वापस अंदर गए देखने के लिए तो उतनी देर में उन्होंने दादी को मार दिया था. एंड देयर वाज अ अंकल विद द बैट. आई कुड सी अ पर्सन विद द बैट एंड अ नाइफ. सो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था. तो हम लोग भाग रहे थे इधर उधर. एंड मैं जैसे ही डोर तक पहुंचा वापस बाहर निकलने के लिए, इतनी देर में मेरे को पीछे से किसी ने मारा. एंड आई वॉज डाउन. उसके बाद आई वॉज लाइक अनकॉन्शियस, बिट ऑफ कॉन्शियस बट मोस्टली अनकॉन्शियस. ऑलराइट, ओके. जब आपके दादी ने आपको फोन किया टू हेल्प विद द माइक्रोवेव, you entered the house. After entering the house, did you notice anyone inside the house? No, but she was behaving a bit awkward at that point of time. If you're saying your daddy was behaving a little awkward, did she have any health conditions that would cause that? As far as I know, no. Right. For the court to know, can you mention your daddy's name? Okay. What? I didn't hear that. I'll repeat the question, sir, for the court to know. क्या आप आपका दादी का नाम बता सकते हो? Shenoy, first, if you don't mind, do you prefer me like talking in English or Hindi? Is there any preferred language? Sir, Hindi. All right. क्या आप आपकी दादी का नाम हमें बता सकते हो कोर्ट को? Sir, रजनी चौरसिया. रजनी चौरसिया. All right, I will just take a note of that. Yes, sir. All right. So your grandmom. Okay, now as for your story, आपका दादी है. She opened the door for you. Oh my God. She then took you to the microwave, and eventually walked back inside her room. Yeah. Right. Your Honor, I would like to put this on the record that Shenoy Froster himself has said that
Mastani was outside the house, and as soon as something happened, she entered the house. So while Mastani was outside the house, there was no possibility that somebody entered the house because Mastani would know about that. So Shenoy would be informed about that. At what point of time did Shenoy mention that? As soon as her Dadi was inside the room and there were some people trying to attack her. Objection, my lord. I also said that there were two people already inside the house. जब मैं sneak करके देख रहा था उनके bedroom में. Your Honor, I would just tell you exactly 2 questions ago. I asked Shenoy Frost point blank, was there anybody else in the house? He said no. His answer was not maybe. His answer was not he was not sure. His answer was no. And I would like the court to pay attention to that answer. Objection, my lord. I would like to say on that. Sir, objection sir, Mr. Shenoy, if you have any objections, like you cannot object on the statement, or you have to make a valid objection. Ki what is the objection regarding? You have to explain that. Sir, घर के अंदर घुसने के बाद घर में तो कोई नहीं दिख रहा था. How would I know about the bedroom? Like मैंने उस टाइम तक तो देखा ही नहीं था ना bedroom की तरफ पे कि कोई होगा. It's not an objection, Mr. Shenoy. Let's move on. Alright. Objection overruled. Alright, continuing with the questions. Yeah, so what was your Dadi's name, Shenoy? Rajni Chaurasia. Rajni Chaurasia. Is she doing? I just wanted to ask you, is she fine now? Like after whatever happened, is she okay? Sir, उस दिन के बाद से like बात नहीं हुई. I would just like the court to know that there wasn't a real emotional connect between Shenoy and her Dadi, because if there would be, after what happened of the incidences, as a human being, they would be worried about if the Dadi was fine or not. But he's not even gone and checked on whether she's fine. Alright, Shenoy, first moving ahead with the questioning. I would just like to know, how did your Dadi call you that day? Was it via phone? Was it via email? How was it? Like, वो contact करने की कोशिश कैसे किया उसने? Sir, it was a phone. So, I'm sure आपके पास उनका, like, you would have some contact details of आपकी दादी, right? Yeah. Alright, okay. I guess it was a private number as far as I know, but I also have a landline. Your Honor, I would like that to be on record that Shenoy's Dadi called him from a private number. Alright, Shenoy. As soon as you reached the Grove Street house, can you, just for my understanding, since it's your Dadi who owns the house, how often do you visit your Dadi? Sir, it's my cousin Dadi, so I don't visit her often. Okay, so that's okay, that I understand. But like, how often do you go to her? Like, it's like very rare. So if I would say once in 6 months, would I be accurate? I guess, yeah. Alright, can you help me understand can you help the court understand which house does your Dadi stay in? It's near the Grove Street main circle. Can you describe the house a little more? Or if you have an address of the house, that will be fine. There's an abandoned car outside the house which is covered with blue colored sheet. Right. Are you sure it is covered with a blue color sheet? Yeah, as far as I remember, yes. Alright, okay. I'm going to move ahead with the questioning and come back to this point. Alright, so as soon as you were unconscious and you were taken, what exactly happened after that? Do you have any memory? Exactly after that, I was in the car. That's what all I can remember. Alright. I'm just going to go into looking at the evidences also that relate to this witness. Please mention the evidence number as well for reference. भाई मेरे को तो पता ही नहीं. Yes sir, 1 second. Evidence भाई मेरे को भी दिखाओ ना. I'm going to be looking at first evidence number 1. So Mr. Shenoy, I would like to just understand, and I would like the court also to understand, what were you doing with lockpicks on you? Mr. Jake, can you forward the evidence to Mr. Shenoy as well, since his lawyer is not here? Yes, sir, I'll do that. Yeah. ये ना बात.
Shenoy take a look at the evidence and yeah. Alright sir. I've sent you the evidences, sir. तो सर क्या आप बता सकते हो कि आपके पास जो एक टूल होता है called a lockpick, why do you have it? Sir, actually, Canada mein, when I was in Canada, it's about 2 years ago. I was a mechanic there, so I know very much about the cars. So lockpick मेरे पास इसलिए थी. I would like the court to know that every call that we get that is in relation to a burglary, which is a potential crime that Shenoy committed, they do utilize a lockpick to enter the house, which relates to possession of items used in the commission of a crime. So, Officer Jake, sidebar. Yes, sir. Is there any report regarding that? As in, sir? No, sir. The locks of the doors are always broken, and lockpicks are used, lockpicks are used generally, sir, for any forms of doors, whether it is a car, whether it is a normal door, to break open locks. 454. I mean, people have directly told us that they've used these to enter the house. भाई लॉयर कहाँ से लाऊं, पैदा करूँ क्या लॉयर? आया ही नहीं भाई, उसने बोला 9:30 बजे मिलूंगा, मैंने बोला ठीक है, आया ही नहीं भाई बंदा. Alright, okay. Moving forward, I would also like to know what are 6 bottles of Oxy doing with you? So I found it inside the microwave of my dadi. You found 6 bottles of Oxy inside the microwave of your dadi? Yeah, I thought to give her back when I will give her microwave back. Then I thought that I will return her back. That's why. Okay, and what else did you find inside the microwave or outside the microwave if you took anything else? It was some bottles like which you mentioned. I don't know about Oxy or something. So there were some bottles that I picked up, and I guess यही था शायद से, मेरे को जितना याद है, अच्छे से याद नहीं है मेरे को. All right. I would like to know what one ammunition was doing with you. Ammunition. I found it on the street, so I thought to keep. I will just I'm a a collectible type person, so I collect things and I keep it in my stash. Okay, so just clarifying that anything you find on the streets, you would pick it up if you feel it's a collectible item, irrespective of who it belongs to. I mean, like it was laying on the ground and there was no one there, so I thought to just see it. That's why. I'll ask the question again. If there is an item that you find on the road and आपको पता नहीं है वो किस, like who owns that item, आप उठा लोगे if it's a collectible? No. It's like मेरे को obviously report करना चाहिए था PD पे. I agree on that. But उस टाइम पे मेरे को like phone आया था ना, तो मैं इसलिए उधर चला गया था. तो वो इसलिए मेरी जेब में थी. मैं आपको उस चीज़ का रीज़न दे रहा हूँ. नहीं, because आप एक साइड पे बोल रहे हो that it's a collectible, और दूसरे साइड पे बोल रहे हो that you're in a hurry. So are you? I'll ask you this one more time so that you have time to define your question and not like actually get confused with your own answer, because you just said no, you said maybe. So I'll ask you one last time that any item on the road, अगर मैं घूम रहा हूँ and I find a small metal object on the floor, a small gold-plated object, would your first instinct be, if there is no owner around, to pick it up and keep it with you? No. Alright, I would like the court to know that his answer has changed from being unsure to eventually being Depends no on as to picking up items. Product ना. He had said he is fond of collectibles and eventually भाई इसका कोई आंसर ही नहीं है मेरे पे, क्या no. बोलूं इसको? Yet he has 1 point of ammo with him. So I would like it to be clear that the items that are there in his pocket, we have unsurety as of now as to what actually belongs to them, or if there are actual owners for those items specifically. देखने दो.
Okay, moving ahead. You seem to be really fond of gold. Am I right? Yeah. Okay, so like, do you have any like, can you like inform the court on where you have purchased your like watches and your chains from, because they seem to be made of gold. So I got it gift. I got this gift from my friend. I don't remember, but there was no name on that gift, and it was a birthday gift. So उसमें से मिली थी मेरे को. All right, okay. और क्या है? Can you just for the court's information, can you just like raise your hands for just 1 second? A what? Can you for the court's information, can you put your hands in the air for 1 second? Oh yeah. As well as the other hand, if you don't mind. Mr. Jake, what are you exactly trying to do? Sir, I would just want the court to know that Mr. Shenoy Froster, in evidence 1, has exactly 4 watches or 5. I'm just rechecking the evidence. Has exactly 4 watches. 4? Seems like he has a high collection of watches, maybe, but has not had a 2. single watch on him as of now. So I really, if a person did have multiple watches on him as ownership, he would have been wearing one at all time, because carrying 4 watches in just your pocket is not really what any human being does at any point in time. Jake, so that's are what you sure that it's 4 watches? It's 2. Yes, sir. There are 2 golden watches. There are 2 Fitbit watches. Let me just take a look at the evidence. Hold on. Yes, sir. All right. Yeah. सर मैं कुछ बोलना चाहूँगा डिफेंस में. Yes. सर मैं रोज़ सुबह जॉगिंग करता हूँ, तो मैं अपनी फिटबिट्स अपने पास ही रखता हूँ. एक मैं अपने हाथ पे लगाता हूँ और एक मैं अपने पाँव पे लगाता हूँ, so that I can count my steps and I can count my breath and everything. So that's why I had 2 Fitbits at that point of time. Noted. Any more questions, officer? As of now, for Shenoy, I do not have questions, but I might call for re-evaluation after the other witnesses have come. All right. Mr. Shenoy, would you like to cross Officer Jake Williams? No, sir. Not right now. All right. Next witness, Mrs. Officer Jake. I would like to call Officer Shubham on the stand. Officer Shubham, please take the stand. So since he is a DO, do I need to put him on the oath? Confidence No, it's fine. I hope he knows the consequences for lying under oath. But we can begin. Bye. Alright, Shubham, from as per what exactly happened that day, can you please mention it to the court in detail? Alright, so dispatch got a call of burglary at Guru Street. When we responded, there I saw a blue color Ferrari in front of that exact same house जहाँ पे हमें report आई थी. Just after 1-2 minutes, एक female जो मस्तानी है वो बाहर आती है और उनके साथ शेनॉय भी होते हैं जो कि इंजर्ड होते हैं. फिर वो दोनों पैनिक में गाड़ी में बैठते हैं. They started running away. हम उनको चेस करते हैं and soon in 2-3 minutes वो इनोसेंस बुलेवर्ड एक ब्रिज है वहाँ पे पहुँचते हैं. मैम अचानक से वो राइट टर्न लेती है एंड वो एक्सीडेंट होता है. वो भी डाउन हो जाते हैं. जब हम गाड़ी के पास अप्रोच करते हैं हम देखते हैं मैम भी ब्लीड आउट की वजह से डाउन हुई है. उसके बाद हम उन दोनों को पिल बॉक्स पे ट्रीट कराते हैं. फिर सेल्स में लाते हैं. जो मैम है वो प्लीड गिल्टी करते हैं दैट शी हैज डन बर्गलरी बट शेनॉय फ्रॉस्टर डज नॉट प्लीड गिल्टी एंड दैट्स इट. All right, okay. And can you also mention the incidents of the conversation basically between you and Shenoy Froster in the cells? Like he was trying his best to convince me that he has not done anything wrong and making that a granny story, which I don't feel it's true. And because of that, I have charged him for false reporting. That's okay. Aapko, like, as an officer, you might not feel it's true, but I think that the court will decide कि वो सच है कि नहीं है. All right, okay. Mr. Shubham, क्या मैं जान सकता हूँ कि like you've been doing duty regularly, right? Yes. How many calls of a burglary आपको आते हैं from this particular location, Grove Street?
like every day, like around 4 to 5 calls. Alright, I want the court to know that Guru Street actually, as per our duty calls, the amount of burglary calls that we get on an everyday basis is over 5 to 6 per night, and I would like the court to know that that is a high crime rate place. Okay, moving forward, जब आप उधर पहुंचे थे, आप वो घर के बाहर थे, and you said you spotted a Ferrari, right? Yes, sir. जब मिस मस्तानी ने मिस शेनॉय को और मिस्टर शेनॉय को अपनी गाड़ी में डाला, क्या did they try to have any conversation with you, talk to you? No, they just उन्हें शेनॉय को गाड़ी में डाला, sat in the vehicle and ran away. I want the court to again put emphasis on this point that Shenoy was put in the vehicle and वो भागने लगे थे. Just to clarify, when Shenoy was put down in the vehicle, was he conscious? No, sir, he was injured. He was unconscious. So I would just like to emphasize this because if Shenoy had done nothing wrong, they would have asked the police for help and not ran for the police. Okay. Moving forward, I'm sure कि आपने बहुत सारे ऐसे हाउस रॉबरी को अटेंड किया है. Yes, sir. क्या ये एक पैटर्न रहता है कि पीपल जहाँ से भी हाउस रॉबरी का कॉल आता है वहाँ से सस्पेक्ट बाहर निकल के भागता है एंड दे इंस्टेंटली ट्राई टू एवेड द पुलिस? इज दिस अ जनरल टेंडेंसी यू हैव नोटिस फ्रॉम क्रिमिनल्स? Yes, sir. एंड क्या आपके हिसाब से उस दिन क्या कुछ अलग हुआ था? नहीं सर, ये जो इंजर्ड हुए थे ऐसा हमें बहुत सारी रिपोर्ट आई है. जब हम घर के अंदर ब्रीचिंग करते हैं तो हमें बॉडीज अंदर ही मिल जाती है, बट दिस टाइम एक फीमेल थी और एक ये बाहर आए थे. लाइक दिस इज अ कॉमन थिंग दैट अंदर जो ओनर्स होते हैं बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं. दे कैरी अ लीथल विद देम. जो सेम इनके साथ हुआ तो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए इनको इंजर्ड किया था. ऑलराइट, ओके. एंड उस दिन लाइक एज सून एज दे ट्राइड टू एवेड, फिर क्या हुआ था वो टाइम पे? लाइक जो मैंने मेंशन किया कि नोसेंस बुलेवर्ड के ब्रिज के ऊपर जो मैम थी वो पहले से उनको स्टैब किया था वो घर के ओनर ने, एंड थोड़ी देर बाद जाके वो ब्लीड आउट होके वो भी फेंट हो गई थी, अनकॉन्शियस हो गई थी. दैट्स इट. उसके बाद हमने उनको ट्रीट करा के प्रोसेस किया था. ऑलराइट, ओके. सो एंड जब like after that the suspects were taken to Mount Zona for further treatment as per what you mentioned, right? Yes, sir. Alright. I would like the court to know that Nancy had accommodated a private doctor, hence we do not have medical reports currently present. जब as soon as the chase started या जो भी हुआ, क्या कोई ऑफिसर्स ने घर के अंदर ब्रीचिंग किया? Yes, Officer Gary and Revdat sir. Actually, Revdat sir gave a command of to breach in, तो Officer Gary ने अंदर breach in किया. He found out some blood evidences and घर के अंदर उस वक्त कोई था नहीं. Alright, I would like the court to know कि as soon as the officers breached in, there were no other individuals found. Mr. Shubham just said कि घर के अंदर कोई नहीं था. I would like the court to also know that the blood evidences have not been processed in forensic because of equipment. The Vespucci PD, I mean the LSPD and the SASP is currently waiting for upgradation and equipment so they can process the equipment, process the evidences, and the evidences ideally would link back to Shenoy, but I do not want to jump to that conclusion. भाई क्या बोलूं, भाई क्या बोलूं, If there is भाई no forensic team, then it won't be admissible. Alright, okay, that is completely fine. Yeah. But I'll just let the court know that there were evidences found. There won't be dismissible, I understand that. Alright, blood evidences के अलावा और कुछ मिला है जो ये मतलब उधर कोर्टरूम में? I mean, sorry, उधर घर के अंदर? नहीं. Alright, Your Honor, as of now, I have no more questions for Shubham. Mr. Shenoy, any cross questions? हाँ जी सर, मैं पूछना चाहूँगा एक दो क्वेश्चंस. आ जाओ सर. मेरे को आपसे ये पूछना है कि जब आप घर के अंदर गए थे तो आपको जो ब्लड सैंपल्स मिले थे तो वो किसके थे?
Mr. Shenoy, I have already declared that Okay. any of the samples are not admissible in court right now because there is no Alright. forensic team. So you need to change the line of your questioning. एंड सर मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी जो कि ये थी कि जब आप घर के अंदर गए थे तो आपको आर यू श्योर कि आपको अंदर कोई नहीं दिखा था? I object, Your Honor. Asked and answered. Sustained. Mr. Shenoy, जो already पूछ चुके हैं, don't ask the same question again, but you can rephrase the question, like you can change the wordings of the question. सर मेरे को ये पूछना था सर, मेरे को बस ये जानना था कि आप बस ये एक चीज़ नोटिस करना, इन्होंने बोला कि घर के अंदर कोई नहीं था, ठीक है सर, एंड अगर घर के अंदर कोई नहीं था तो फिर मैं अकेला था मस्तानी के साथ, तो क्या मस्तानी ने मेरे को मारा? I don't. I object. I mean, is he asking a question or is he just stating a fact from speculation? He's asking a question. I object. Speculation. Overruled. It's not a speculation. He's asking a question. You can ask your question again, Mr. Shenoy. सर मेरे को बस ये जानना था कि जैसे आपने बोला कि घर के अंदर कोई भी नहीं था एंड द हाउस वाज एम्प्टी, तो फिर मेरे को मारा किसने? राइट, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में कर लूंगा। जब ये लोग घर के बाहर गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, उसके 1 मिनट बाद रेजर उस सिचुएशन पे अराइव करते हैं, देन ही डिसाइड्स टू ब्रीच इन। तो मे बी 1 मिनट के गैप में वो दोनों बाहर आ गए होंगे जो लाइक थे जिनने इनको स्टॉप किया। अभी सर इन्होंने खुद ही ये चीज़ बोल दी कि मे बी 1 मिनट के गैप पे वो दोनों बाहर आ गए होंगे। तो सर नोट कर लेना बस। ठीक है सर। और क्या पूछना था इससे? 1 सेकंड मेरे को बस सोचने दो। टेक योर टाइम। भाई और क्या पूछ सकते हैं इससे? इसने ये बोला कि घर के अंदर नहीं है, ठीक है, ब्लड एविडेंस का ठीक है, हो गया। सर जब मस्तानी ने मेरे को गाड़ी में बिठाया तो उसके बाद आपने एक भी बारी पूछने की कोशिश करी कि मैम आर यू फाइन, कि क्या हुआ है, कैन बी टॉक? आपने बात करने की कोशिश करी? मैम बिल्कुल बात करने के इंटेंशन में नहीं थे, उन्होंने बैठा के सीधा हमने वो भगाने लगी थी गाड़ी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मस्तानी जी ब्लीड हो रही थी। अब वो ब्लीड सिचुएशन में वो किसी से बात करने, आई गेस वो किसी से बात करने की सिचुएशन में थी ही नहीं, तो ना इन्होंने वैसे भी पूछा नहीं इन्होंने, बट ना वो उस सिचुएशन में थी, तो इसलिए उनको उस टाइम पे वही सूझा जो उन्होंने किया। Noted. और क्या पूछ सकते हैं? Any further questions, Mr. Shenoy? सर जब मस्तानी जी मेरे को बाहर लेके आई, क्या मेरे हाथ में या मस्तानी जी के हाथ में आपको कोई वेपन दिखा था? आपके दोनों की एज अ पॉकेट एविडेंस दे जस्ट हैड अ फ्लैशलाइट। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, फ्लैशलाइट थी। फ्लैशलाइट क्या कहते हैं, लाइट मारने के लिए यूज़ की जाती है एज फार एज आई नो, तो वो काइंड ऑफ वेपन तो नहीं है, बट ठीक है अगर ये Object, Your Honor. What's the objection? Prejudicial. Flashlight is actually a weapon that is harmful. It has a lot of plastic objects on it, metal objects that can actually make a person unconscious. Sidebar, both of you. I will sustain the objection, but I will allow him the questioning. Okay. That's okay, sir. Yeah, but I'm just saying the flashlight is was harmful. I'm sustaining the objection. Yeah, you can still continue the questioning. Yeah. Okay. Alright. और क्या कर सकते हैं इसको क्वेश्चन? या आई एम थिंकिंग भाई, और क्या पूछ सकते हैं इससे? जब ये पीडी पे लेके गया था तो इसने सर जब ये मेरे को अरेस्ट करने के बाद, पिल बॉक्स से लेके जाने के बाद पीडी में इन्होंने मेरे को सीधा जाके सेल्स में रखा था एंड नॉट इन इंटेरोगेशन। आई ऑल्सो सेड दैट आई वॉन्टेड टू टॉक टू देम। इंटेरोगेशन तो इन्होंने की ही नहीं, अपनी मर्जी से इन्होंने चार्जेस लगाए हैं उस टाइम पे एंड इन्होंने अपनी मर्जी से सारा कुछ किया था, तो वही आप इनसे पूछ सकते हैं। I object, Your Honor. Opinion. He does not know PD protocols, PD SOPs. The officer stuck to his processes. Also object on that. Hold on. You cannot re-object, Mr. Shenoy. Alright, I'm just overrule or sustain. Okay. Alright. Yeah. So, Mr. Jake, is your objection opinion or is your objection testifying? What is it exactly? So actually, it is opinion.
Because as per opinion, if a witness testifies about an opinion that has technicality in nature which he or she is unaware about and does not have facts about, it comes under opinion. And our SOP is our functioning document which portrays how a PD functions. Therefore, it is his opinion on how a PD should function, whereas how we actually function. Sustained. Mr. Shenoy, since you don't know about PD SOP, I will just ask you to refrain to ask any questions regarding that. But if you have any questions regarding the SOP, you can ask the officer. Okay? सर मेरे को मेरे लॉयर ने इस बात के लिए लाइक बताया था तो मैंने इसलिए पूछा था बस. It's okay. It's okay. You can ask him any question if you have like regarding the SOP. You can ask the officer about the protocols. Alright. Okay. ठीक है पीडी वाला हो गया. ठीक है और सर बस यही था सर मेरी तरफ से. Alright. Officer, you can go back. Thank you. Officer Jake, any more witnesses? Yes, I would like to call Miss Mastani on the stand. Miss Mastani, please take the stand. And please get her under oath as well. Yes, sir. Thank you. Miss Mastani, please repeat after me. I swear on the Constitution of Los Santos. I swear on the Constitution of Los Santos. That whatever I say will be the truth. Whatever I say will be the truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. All right. Miss Mastani, क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस दिन आपके हिसाब से क्या हुआ था? मैं शिनोय के साथ घूम रही थी तब तक उस पे कॉल आया उसकी दादी का. तो वो बोला कि चलो एक काम है. वो उसकी दादी के यहाँ माइक्रोवेव खराब है. एक्चुअली वो बहुत ओल्ड एज है. सो उनको प्रॉब्लम हो रही है मतलब खाना वाना बार बार बनाने में और माइक्रोवेव खराब होने की वजह से. तो उन्होंने मेरे को बोला कि साथ में चलो. ठीक है, मैं माइक्रोवेव लेके आऊँगा फिर चलते हैं. ठीक है, फिर वो अंदर गया. उसने माइक्रोवेव पिक किया और फिर उसने मुझे तुरंत बोला कि यार अंदर आ मतलब चीखता हुआ. Okay. मैं अंदर Let me stop you. उसने आपको कैसे बोला था? उसने मुझे रेडियो पे बोला कि अंदर आ. I would like Your Honor to note that Shenoy entered the house. He picked up the microwave. Microwave is a heavy product that is not easily liftable with one hand and was yet able to communicate on the radio easily. Yes, Mastani, you can continue this. Continue. Noted. So before you speak further, I just like to clarify. Did you you pleaded all guilty to all your charges, right? तो मैंने जो गिल्टी प्लीड करा है वो उस दिन मुझे बहुत जोर की मतलब चोट लगी हुई थी एंड आई वाज नॉट फीलिंग वेल. मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गई थी एंड मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ के ऑफिसर्स को सब एक्सप्लेन करूं क्योंकि वो और मानते ही नहीं अगर मैं एक्सप्लेन करती तो. Right, guys, we'll take a 5 minutes recess to join into my chambers. Hold on. Come into my chambers, Officer Jake, Miss Mastani, and Mr. Shenoy. 5 minutes recess. Alright. आजा. भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि हारने वाले. Yes. So are you testifying? You pleaded guilty. Are you changing that to not guilty right now? Yes, sir. So why did you plead guilty in the first place? Because I know ना कि वो ऑफिसर सुनेंगे ही नहीं बात. इसने सब कुछ सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो मानने को रेडी नहीं थे एंड आई वाज नॉट कंफर्टेबल. लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड मैं बहुत नींद में भी थी. तो मैं बोली कि ठीक है ओके आप मुझे लॉकअप कर दो, मैं वहीं जाके रेस्ट कर ली. Did you contacted any lawyer with Mr. Shenoy? आपने हाँ उन्होंने ट्राई किया था बट कोई मैंने सर लॉयर बुलाया था उस टाइम पे. लॉयर थोड़ा सा लेट हो गए थे आने में. इतनी देर में इनको लाइक प्रोसेस कर दिया था ऑफिसर ने आई गेस. फिर जब लॉयर आए थे तो लाइक लॉयर ने बात करके एंड लॉयर गॉट मी बेल्ड आउट. Jake, is this true what she's saying? Yeah, this is true. But अगर किसी को भी मेडिकल असिस्टेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए, they won't be like हाँ ठीक है you can process me and stay behind bars. And that too, just give me 1 second.
Yeah, I'm just rechecking. She was inside Yeah. bars for 30 months. So if I'm injured or if I'm sleepy, if I'm whatever, I would still fight no matter what if I feel I'm not guilty. Instead of serving jail time for 30 months, that's a very long duration. Mhm. So that I feel is just an excuse because right now Shenoy pled not guilty and she pled guilty. So it's an excuse to help Shenoy out in this case. I don't think there's any other reason. Ms. Mastani, you got any defense for that? Like any reason for that? No, sir. Actually, I'm not guilty. I plead guilty थोड़ा because तेज I बोलोगे was. आप, if you don't mind? आपकी तो आवाज़ थोड़ी कम आ रही है. सर एक्चुअली मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पेन में थी, दैट्स वाई, क्योंकि मुझे एकदम, मैंने, आप ऑफिसर से पूछ सकते हो, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा, ना मैंने कुछ आंसर किया. उन्होंने पूछा मैम आप प्लीड गिल्टी करते हो, मैंने बोला यस, दैट्स. Did you got any medical assistance? या सर वी गॉट पहले पिलबॉक्स से तो गए थे, उसके बाद ही सर हम लोग नहीं, she said she was in, right? So did you got any medical assistance for that? चोट लगती है तो इतनी जल्दी रिकवर तो नहीं होता कि लॉकअप में नहीं, बैठे that गए. is fine, that is fine, but did you ask for a doctor or anything? नो सर. सर एक्चुअली उस टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे ना पिलबॉक्स पे, सो वही सीन है. नहीं सर, they could have come on duty later, they didn't ask. Yeah, later. If they asked, we could have checked. क्या था सर? No, after that, once we were in the cells, if she was still feeling pain, she could have asked for a doctor. But if she was under the assumption कि कोई doctor नहीं है, that is the assumption, and that's why she like ठीक है मैं जेल जाती हूँ, which is a bigger thing. आई एम सॉरी सर, लेकिन आप वहाँ रहते तो वहाँ देखते ऑफिसर्स रेगुलरली वो कुछ सुनने को रेडी ही नहीं थे. That again, ma'am, I apologize that आपको ऐसा लगता है. I apologize from the entire PD force कि आपको ऐसा लगता है. But our officers are always there to listen to the people. I myself listen to a lot of people. तो मैं होता नहीं होता is not the matter because I believe in my officers. But अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास ऑफिसर ने नहीं माना है या नहीं सुना है, then I apologize for that. सर मुझसे तो पूछा भी नहीं गया. But in this case thing, sir, if she was not well and she even mentioned it once, you would have provided her medical assistance. But after the things that happened at Grove, we instantly gave them medical assistance at Mount Zona, where Nancy provided a private doctor for these guys. ठीक है, let me have a word with Jake. You guys wait outside. I will be there. I will continue. All right, sir. Yes. Yeah. अरे कुछ पीने का दे दो भाई, कुछ पीने का दे दो. हाँ दे दो यार जरा. अरे चलने की स्टाइल तो तेरी ऐसी थी बादशाह. अरे हट जाओ सर, इनको कुछ पीने के लिए दे रहा हूँ, हट जाओ. बोलो मैडम, बोलो. ये बताओ चुलबुल सर, आपकी मैडम कैसी है? कौन सी मैडम? क्या बोल रहे मैडम? मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी. अरे रे, मैं बताऊं? सर उन्हीं की बात करें क्या जिनका आपको कॉल आया था? सर इधर भी बैठ सकते क्या? अपन काय को कुर्सी लगा ले? अरे डेट पे होके आए. अरे आपको उधर बैठ जाओ ना, आपको वीकनेस हो ना, बैठ जाओ उधर. अरे सर काय को उधर वीकनेस बैठता है. अरे जेकब सर इतना खर्चा, बाप रे इधर आइए. ऊपर देखो सर, एक कोड है, डेकोरम मेंटेन. आप तो बीच वाले कुर्सी लोगों पे की फोटो लगाइए. हां अभी बैठ जाते हो. हां ऊपर देखो आर्ट है. सर आ गए जस्ट सर. वाह अब लूप होल्स ढूंढियो स्टेटमेंट्स के. सर पर कोर्टरूम में क्या स्टेटमेंट्स के लूप होल्स क्या ढूंढूं भाई? कुछ मदद ही कर दो, तुम लोग ही मदद कर दो. चैट से पढ़ के बोल दूंगा एक आधे. स्टेटमेंट के लूप होल्स के बच्चों. मैडम तुम अभी हमारे ओपोनेंट हो, तुम लोग ही बता दो कुछ भाई. अभी भी लॉयर आ जाए ना तो कुछ हो सकता है, लेकिन लॉयर भाई साहब को आना ही नहीं है तो फिर कहाँ से होगा? जेक सर उसकी इंग्लिश पल्ले नहीं पढ़ रही, तुम इंग्लिश पे इंग्लिश बोल रहे हो. चैट भी पढ़नी होती है. अबे तो बताओ ना. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैच कहाँ चल रही है, उसको इंडिया पाकिस्तान चल रही है, उसके वेस्ट इंडीज. अबे तो बताओ तो सही तुम लोग, तभी तो पढ़ूंगा ना. चैट को लिखता ही नहीं भाई. उसका छोड़ो, हमें नहीं समझ में आ रहा. नहीं मेरे को आया समझ. पांडे सर सीख गया भाई. एक ये इनसे बात करते हैं ना जरा अर्जेंट. सी अबे यार ये भी तो नहीं था, ये भी तो चला गया था. मिलाया तो था मैंने फोन लॉयर के बच्चे को, ये भी चला गया था. जा तू पार्टी एमयूआई ट्रेनिंग में आओ वापस बेटा.
भाई क्या लॉयर है भाई यहाँ के भाई, बैगन की बना MDT एक भी लॉयर। ये देखो जरा ये देखो बुलाए, पर्सन इज ये नॉट पड़े हुए, ये अवेलेबल कब भाई। पड़े हुए? क्या लॉयर है भाई, माँ कसम। अरे ये इनको विटनेस बुलाया। सर सामने को फिर सामने बैठते आ जाओ सर। अरे आपको इतने उधर बैठना इतने पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, इतने इतने विटनेस, 1 2 3 3 इतने विटनेस कैसे बैठेंगे? डॉक्टर साहब मेरे को लगता है मेरे को भाग जाना चाहिए। हेलो डॉक्टर साहब हेलो जी बोलिए। सर मेरे को court लगता is है मेरे back को in हार्ट session. अटैक आने वाला है। मगर कुछ क्या 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 आप इधर कुछ बैठ नहीं जाओ ना, कुछ नहीं। witness होगा, इधर बैठ जाओ। Mr. Shenoy, you were asked, continuing with your questioning. You can Yeah, continue. it was almost done. Yeah. Yeah, you can continue. No worries. I don't have any more questions, I guess. Yeah. Actually, Your Honor, I was talking to Mastani while she was in the stand that time. All right. Yeah, continue. Officer Jake. Your Honor, do we mention what has changed in this case so that Yeah, everyone's aware? so I would like to just everybody know ki she had pleaded guilty earlier, but I guess she was not in her proper state of mind to make that decision. So we are going with a decision that she is not pleading guilty on the charges that has been pressed on her, and the same goes for Mr. Shenoy. So we are moving forward with both of them are not pleading guilty for the charges, and the verdict will come. Then it will be decided, and if they both are found guilty and or not, but if they are, they both will face jail time and fine. So this is just to inform you guys, and we're gonna continue. All right. तो मिस मस्तानी, आप जब वो घर के अंदर गए थे तो क्या हुआ था उधर? सर वहाँ 2 लोग थे जो शेनॉय को मार रहे थे, ठीक है, और मैं आगे नहीं जा पाई रूम तक जहाँ शेनॉय ने बोला था कि उनकी दादी को वो पहले से पीट रहे थे, तो वहाँ नहीं जा पाई। मैं शेनॉय को बोली कि भागो यहाँ से, वो बहुत मार रहे हैं, हम उन्हें नहीं मार पाएंगे। तो तब तक उसे बहुत मतलब लग गई चाकू और वो वहीं बेहोश हो गया। तो फिर मैं उसको उठाई और मैं बाहर लेके आ रही थी तो पीठ पे मुझे चाकू मारा उन 2 लोगों ने। मैम, जब आप घर के अंदर जा रही थी, were there any police officials around you? तो मैं जब घर के अंदर जा रही थी तो सीढ़ियों पे ही वो उसको मार रहे थे, तो मैं अंदर नहीं, you didn't get my question. जब आप before you entered the house, क्या उधर कोई PD officials थे? नहीं थे। No. Your Honor, I would like you to take a look at evidence number 6, body cam evidence, camera evidence of Mr. Shubham, where he has seen Miss Mastani outside the door about to enter. Yeah. All right. जब आप अंदर गए थे घर पे, you saw that Shenoy was being... Can you forward this evidence to Mr. Shenoy? Yes, I'll just they right can away. let them take a look at the evidence as well. Sir, as per your permission, do you mind if I just forward Shenoy the case file so he'll have everything I have access to? Yeah, please do. A4. बराबर। Mr. Shenoy, just take 5 minutes if you like to read the case file and check all the evidences. Then you can also take a look at the evidences at the same time as well. All right. Shenoy, I sent you the case file. All the evidences are right at the bottom of the case file. ठीक है, evidence number 6. ठीक है। Do I give Shenoy some time or do I just continue questioning? Do you want some time, Mr. Shenoy, or? No, sir. He can continue. All right. Yeah, you can just read it while you're there. Yeah, continue. मैम, जब आप घर के अंदर घुसे थे तो आपने देखा कि कोई शेनॉय को मार रहा था, तो what did you do next? मैंने इसको मैं बचाने की कोशिश करी इसे। मैंने बोला तुम घर से बाहर निकलो, मैं रोकती हूँ उन्हें, ठीक है, बट उन्होंने तब तक ये बेहोश हो गया। फिर मुझे इसको उठा के बाहर लाना पड़ा और मुझे पीठ पे उन्होंने चाकू मार दिया। Sir, I have an objection. As per Officer Jake Williams, as we can see on the evidence 6, it is clearly you can see that on the evidence 7 also that Mastani is running away from the door. So I guess it's late. It's like later on thing. It was not on the scene thing.
Noted. I'll re-clarify. Evidence 6 and 7 are different. 6 was her entering the house. 7 was him helping Shenoy Foster into the vehicle and then continuing to flee and evade. All right. Moving forward with the questioning. तो जब उसने चक्कू मारा, like, आपने उसके बाद क्या किया? मैं इसको गाड़ी में बैठाई और मुझे भी ब्लीडिंग हो रही थी। घर के अंदर? घर मैं बाहर लेके आ गई थी। मैं बाहर आते टाइम जैसे मैंने डोर ओपन किया, हाथ से खोला, ठीक है, और मैं उसके बाद से इनको लेके आ रही थी, तो उसके बाद से उन्होंने पीछे से मुझे मारा। ओके, क्या आपने उधर कुछ उनको किया वापस इन सेल्फ डिफेंस? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया और मैं इनको मतलब मैं बाहर आके दरवाजा बंद करी और कि वो बाहर ना आ पाए, और मैं इसे कार में डाली और वहाँ ऑफिसर्स सब अवेलेबल थे। उन्होंने कोई बात करने की कोशिश नहीं करी, कुछ भी उन्होंने नहीं बोला मुझे। मैं गाड़ी में लेके, क्योंकि मुझे ब्लीडिंग हो रहा था, सो मैं इनको लेके जा रही थी माउंट जोना। अब वहाँ से या आई वॉज इन पैनिक सिचुएशन, क्योंकि मुझे खुद को भी बचाना था, उनको भी बचाना था। क्या आपने ऑफिसर से बात करने की कोशिश की? सर उन्होंने ही मुझसे कोई बात नहीं करी, तो मैं क्या बात करूं? No, yes or no? क्या आपने ऑफिसर से बात करने की कोशिश की? No. I would like the court to know that on a daily basis we get over 5 to 6 house burglary calls in Grove Street itself, where a typical criminal in that scenario runs out of the vehicle, gets into the vehicle, decides to flee and evade without conversing with every officer. Due to this, out there, Mastani saw multiple officers, had even injured Shenoy right next to her, did not inform the officer she was injured, did not inform the officers there were people inside attacking her or attacking Shenoy's grandmom, which could have unfortunately caused the death of Shenoy's grandmom, which we are currently unaware about because Shenoy Foster has not yet even contacted her. If they had gone to ensure the microwave was safe out there, there would have been contact with the officers ensuring security for them. Just to remind you, you're not allowed to testify in between. You can ask further questions if you have. All right, sir. Yes, sir. Yeah, you can testify in your closing statement, not do not testify in open court. All right, ma'am, आप and one more thing, sorry to cut you. One more thing I would like to know. Just a second. Yeah. Yes, can you clarify what kind of call you receive on your dispatch while burglary call? We receive a dispatch code of a house robbery. It's called 1090 for us. 1090, and what does it say? Sir, it does state house robbery. All right. Did you receive the same call from you? Yes, sir. All right. Yeah, continue. All right. Ma'am, आप कौन सी गाड़ी में थे उधर? Ferrari. What was the color of the Ferrari? Blue. And who did it belong to? I don't know, actually. Your Honor, I would like the court to know that she is unaware of a $1 million vehicle that she is driving. Who does it actually belong to? Can you tell the court how did you get that Ferrari? Actually, वो शेनॉय की फ्रेंड की फरारी थी, उसको कीज उसने दिया था, वो मेरे को घुमाने ले जाने वाला था। Okay, so it was Shenoy's friend's Ferrari, right? Who was the vehicle registered to, Officer Jake? Vehicle was registered to Akira. Is he here in the court? Unfortunately, she isn't. All right. No worries, you can continue. All right. फिर as soon as you आप घर के बाहर आई, शेनॉय को आपने गाड़ी के अंदर रखा. You all decided to run from there. Officers आपके पीछे आई. आपने वो टाइम सोचा नहीं था कि to stop and help and talk to the officers and ask for help? सर, पैनिक सिचुएशन में मैं खुद को बचाने की कोशिश करूं, ब्लीडिंग मेरी बहुत ज्यादा हो रही थी, या फिर मैं बात करूं, या मैं सोचूं कि मुझे बात करना चाहिए, या फिर व्हाटएवर. I'd like the court to know that she was heavily. I'll actually hold on. Ma'am, जब आपको चक्कू लगा था, was like क्या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था कि was it कम? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था. आप ऑफिसर से पूछ सकते हो. मैंने बोला था कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है ऑफिसर,
ठीक है, मैं चिल्लाई थी कार से। I would like उन्हें वो लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, बट दैट वाज नॉट एक्सीडेंट। एक्चुअली मैं बेहोश हो गई थी ड्राइव करते हुए। I would like the court to know about two things. Number one, Mastani ma'am said she had no communication with the officer. Now she says she did try to communicate. Objection, my lord. What's the objection? Sir, she said she shouted inside the car. Yeah, from the car जब मैं She बेहोश होने वाली didn't थी। have a talk, but yeah, she shouted. Noted. Sustained. Alright, okay. And the second thing is she was bleeding heavily, yet was driving a vehicle which not only could have caused harm to her, but could have caused harm to people and product outside around. So, okay, I just want to know, are you feeling completely fine today? Yeah, I'm fine today. Alright, after जब आपका जब आप जेल गई थी and all of that, जब आप जेल से बाहर आई थी, did you visit any doctor? Yes. So मैं उसके बाद से लॉकअप में थी और मैं काफी रेस्ट वहाँ ले चुकी थी। That doesn't answer. क्या आप कोई डॉक्टर के पास गई थी? नहीं। No. I would like the court to know that she did mention that she was not feeling well after being treated on Mount Zona inside the cells, and healing I get gradual, like over time you get healed, but tabhi bhi if you're stabbed and you still feel unwell, you show to a doctor. She did not take the efforts to go to a doctor. So actually जब वो माउंट जोना से ट्रीट होके आई थी तब मैं सेल्स में थी और सेल्स में आई वाज नॉट फीलिंग वेल, एंड उसके बाद से फिर मुझे लॉकअप में डाल दिया गया और वो काफी लंबे टाइम के लिए था जहां मैं रिकवर हो गई। मैंने ये नहीं बोला मैं ट्रीट होके आई थी, बस मुझे पेन था। Just to clarify, Miss Mastani, were you feeling well today, like as of now? Yeah. Alright. Yeah. ठीक है, alright, continue. बोल देती यहाँ गई थी, बड़ा कोई पूछ रहा है भाई। Officer Jake, any more questions? Yeah, just two more questions, sir. Ma'am, जब Shenoy को ये फोन आया था from his grandmom, do you remember what time of the day or was it? Night बोल दे। 17th of Jan, approx it was 10 PM around 10 PM. Can you repeat the answer? I did not get it. Around 10 or 11 PM. Actually मैंने टाइम एग्जैक्ट नहीं देखा था। That is fine, that I understand. And जब Shenoy को एक कॉल आया था, आप किधर थे वो टाइम पे? मैं उनके साथ ही थी कार में। नहीं, like location. ग्रुप की तरफ नहीं थी मैं। एक्चुअली मुझे ज्यादा लोकेशंस के बारे में आइडिया नहीं है। सो मैं उनके साथ कार में थी और ग्रुप की तरफ ही हम घूम रहे थे। Okay, I have no more questions as of now, but yeah, I would like to call Shenoy after this in case he doesn't have any questioning. Do you want to recross, Mr. Shenoy? No. Alright, Mr. Jake, you can call your next witness. I would like to call Shenoy back on the stand. Yeah. Does he need to be sworn under oath again? Because No, he's under oath. Alright, Mr. Shenoy, I'm just going to come in with all the evidences I have. पहले, can you tell me कि वो किसकी vehicle थी and how did you get your hands on it? So it was Akira's vehicle and she's my friend, so मैंने उनसे borrow करी थी just to room with Mastani. Okay, and ये situation के बाद क्या आपने अकीरा को contact किया about the status of a vehicle? Yeah, I did. Okay, are you aware of the status of the vehicle? No, I guess हाँ नहीं मेरे को नहीं याद। Your Honor, just like to keep you noted about this. That vehicle cost over $1 million. A friend's vehicle. He was careless in this scenario as well. He did not if he was not guilty, he would have at least been concerned what happened to his friend's $1 million vehicle. All right, moving ahead, Mr. Shenoy. Mr. Officer Jake, just to warn you, it's not up to you to decide. It's the court's verdict. All right, so yes, ask you to respect that. Okay. So do not mention guilty word again, please. Thank you.
No, I mentioned he pled not guilty. Yeah. I didn't say he was guilty or not guilty. Alright, no worries. Yeah. All right. Okay. Now I'll just come to the I'll come to the evidences that you have. All right, Mr. Shenoy Frost, can you tell me the status of your grandmom's microwave? Where is it currently? It's outside her house. All right, the court to know it is outside his grandmom's house. He did not even try to get inside to see if she is fine, if she is not fine. That's what typically, generally, a person does when they actually break into a house. Okay. Can you Mr. repeat? I didn't understand the question what you asked right now. Okay, I would like the court to know that he has answered the question apparently without understanding it. ठीक है, I will still ask. मेरे को लगा आपने पूछा कि It's okay. Just ask it in Hindi. Microwave अभी किधर है? Microwave. It's with the police. Okay. क्या आपने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश किया about the microwave? No, because microwave isn't the first thing, you know. Okay. आपका bond आपकी दादी के साथ कैसा है? It's not that much good because we didn't have good relations with her because उनसे थोड़ी लड़ाई वड़ाई हो गई थी मेरी काफ़ी टाइम पहले, so इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूँ. I would like the court to know कि उनकी लड़ाई वड़ाई हुई थी and they are not in good talking terms and Shenoy has not yet even called to ask if his grandmom is fine or not. There could be a possibility. I would just like that to be, these three things to be on the record. Okay, sure. Alright, but what's the point you're trying to make? I will get to that point with my next two questions. Alright, please make it fast. Yeah. Okay, Shenoy, क्या ये हो सकता है कि because your grandmom, आपकी दादी जो है आपसे like you didn't have a good emotional connect, आप लड़ाई करते थे, क्या ऐसा हो सकता है because of frustration you did the unwanted and you were the person जो मारने की कोशिश किया and this is all a picture you portraying? सर चाहे कुछ हो जाए मैं कभी किसी इंसान को मारूंगा नहीं. All right, okay. जब आप सेल्स में आए थे, you contacted a lawyer, right? Yes. Okay. And can we know उधर when you were under interrogation जब बात हुआ था आपसे आपने ऑफिसर्स को क्या बोला था? मैंने ये सेम चीज बताई थी उनको. Are you sure about? Yes. All right. Now, Grove Street, the house that has a car, broken down car, which is covered in that white color thing, right? That's where the house robbery happened, right? Yeah, white, blue. I said blue sheet. Yeah. Okay. I have no more further questions for Shenoy. I'll just put all of that in my closing statement that is required. Alright. You have any other witnesses, Mr. Shenoy? Would you like to cross Officer Jake or anybody? No. Alright. Any witnesses from you, Officer Jake? No more witnesses. Alright, then let's move on to the closing statements. So I just wanted to say one last thing that please do in the closing statement, not testify in open court. Yeah, please say that in closing statement. Alright, sir. Alright. Prosecution, you can go first. And I would also request Ms. Masani to stand along with Mr. Shenoy because she is not pleading guilty to charges. So if depends on the verdict, it will be taken upon. Yeah, you can just stand beside him on the second chair. Yeah, prosecution, you can continue. Alright, Your Honor, as for my closing statement, I would just, मुझे कुछ चीजें I would want to bring it to light. As per जो previous case हुआ था about shots fired in Vinewood, we were made aware by the state कि all the property currently owned is under the government and there is no private ownership. Therefore, जो Shenoy की दादी है, she cannot have private ownership or ownership of that property. Secondly, I want to add to this is that on a regular basis, we get calls around Grove Street of houses being robbed.
the product used to enter any form of door, whether it's a car, whether it is a room door, or whether it is breaking open any form of basic lock, is generally an advanced lockpick or a basic lockpick. These are the two items generally used, and these items have been got in each and every scenario where a suspect has been got into custody of a burglary. The same items were found. The product that was 6 bottles of Oxy, Shenoy claims to have found in the microwave, where Shenoy clearly mentions that he picked up the microwave, he got hit, he was apparently going to get hit and called Mastani for help. He did not even mention anything about opening the microwave, checking the microwave. He went in, as per what Mastani and Shenoy both said, he went in, picked up the microwave, gave the radio call. If this was inside the microwave, ideally it would have come to the PD's notice first and not with Shenoy. Shenoy directly put the microwave inside his bag. He was taken down by people inside the house, and he decided to come out. Mastani entered the house, got Shenoy outside, did not talk to the police, did not ask for any medical help, decided to instantly flee and evade. She did, while being heavily bleeding, decided to move around the streets of Los Santos, which could have harmed more people, which could have caused more damage to public property. She did crash into a bridge at Innocence Boulevard, getting her unconscious as well. I would say that's unfortunate because I do not want anyone to be harmed. Post which they were taken to the cells. They were taken to Mount Zona for treatment, got to the cells. So therefore, because of the regular tendency of a person to break in using a lockpick, that burglary charge has been added. Whereas providing the false information, it comes in where this property is not owned by anybody. And Shenoy has clearly stated under court that his property is owned by his grandmom. So therefore, I feel that these 4 charges would stand by Shenoy. And obviously the charges of recklessly evading and burglary for Mastani would stand. And I would want to end my closing statement by just saying that we do, as an officer, I do want people to be given a second chance. I do want people to actually enjoy freedom and get a life to live and make a name for themselves. I abide by the law. I have no personal connection with anyone where I would want to ruin someone's life. But because as an officer, when we know we have any form of probable cause on a person, we understand the protocols and we work accordingly. And people like Shenoy, we deal with such people every day, where they do commit a crime. They feel bad that they've committed that crime. If they would go back in time, they would not commit that crime. We meet a lot of people like this who talk to us on a regular basis. But unfortunately, Your Honor, we are backed by the law. And if we could take the law in our own hands, very honestly, I would hope that these 2 individuals would get to roam on the street and get a new life and improve themselves. But unfortunately, Your Honor, I work by the law. And as per the law, those are the 4 crimes that work directly to this because of the items found with them, because of the situation they were spotted, because of the dispatch call that we got. So if I would want the court to take everything into consideration. I am okay with the decision that you feel is more convenient in this outcome. That's all for my closing statement, Your Honor. All right, Mrs. Shenoy, your closing statement. And just to remind you, you will speak on behalf of you and Miss Mastani as well. All right? Yeah. सर मैं बस ये बोलूँगा 2-4 पॉइंट्स. वो ये है कि पहली बात तो सर ये ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि हम रोज़ ऐसे क्रिमिनल से मिलते हैं. सर मेरा आज तक का आप चेक कर लेना, मेरा आज तक का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं, मैंने आज तक कोई क्राइम नहीं किया है. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम फॉर विच आई एम बीइंग फ्रेम्ड एज यू कैन सी. एंड बाकी आपके हाथ में सर, मैं उस पर तो कोई बोलूँगा नहीं. बाकी बस यही है कि सर पैनिक सिचुएशन होती है सर, बंदा पहले अपनी जान बचाएगा ऑब्वियसली, बाद में ही किसी से बात करेगा. ब्लीडिंग हो रही होती है तो वही होता है सर कि पहले तो बंदा अपनी जान ही बचाएगा. और तो मैं यही बोलूँगा कि सर जैसे कि ये क्लेम कर रहे थे, मैं ये बोल रहे कि वो प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, तो सर मेरे को जितना पता है, जितना उन्होंने मेरे को बताया था कि दैट्स हर प्रॉपर्टी. मे बी शी वॉज ऑन लीज, मे बी शी वॉज ऑन रेंट, आई डोंट नो अबाउट
that particularly and in details, and I don't want to go in details because मैं उनसे ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, ना मैं उनसे ज़्यादा बात करता हूँ. वो जब उनका कोई फ़ोन आता है, because she's old and she's very she could not just come out of her house and you know वो नहीं कर सकती ये सब काम, तो मैं छोटा मोटा हेल्प कर देता हूँ बस, नॉट इन गुड टर्म्स, बस वही है सर. बस नहीं बोलना चाहूँगा सर मैं. All right. Court is in recess for 5 minutes, and we will give a verdict within 5 minutes. All right, sir. Court's in adjourned in recess. सर मैं बस ये बोलूँगा कि सर it's like my first time, haven't done any of the crimes. Okay, it's okay. So आप you just verdict का wait कीजिए. Yeah, I will just wait for the verdict. Yeah. Yeah. All right, sir. जैसे मजा आ रहा है कि नहीं? मैं जा रहा हूँ सर. भाई सुन, जब भी सुन, बताओ. जैद को मेरा क्या चल रहा, मैसेज में बात, ठीक है? जैद, अरे सुन जैद क्या कर रहा है, जितनी जाके ओवर एक्टिंग पर्दे पे ये ऑफिसर ने करी है ना, बात कर रहा है. ये जो नताशा पीछे खड़े होके बोल रही थी ना, दादी दूधी कजन दादी, कम बोला कर. विस्पर कर रहे थे, विस्पर पूरी तेज आवाज आ रही थी तुम्हारी. अभी भी तुम अपोजिट पार्टी हो, प्लीज स्टैंड अवे. अच्छा जी, ठीक है, आजा मस्तानी, आजा यार, आजा यार, कोई नहीं यार, आजा. मजा आना चाहिए, यहाँ से आए या वहाँ से. बोल तो रही यही चक्कर में मैंने क्रिएटिविटी नहीं अबे किया, चिल मार भाई, चल लेंगे भाई, तू क्यों डरती है? दीवाने मेरे को एक बात बता. आजा सर, बोलो. थोड़ा तो दिमाग लगाना, अभी तेरे सामने इतना अच्छा है, सोच कुछ तो. एक ऑफिसर बोला, एक ऑफिसर वो चीज में बोल दिया, दिमाग लगा. क्या लगाऊं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा. मैं कभी अरे लड़ा ही पागल, नहीं, कभी केस शुभम, वेस के सुन चक्कर में मेरी पड़ा ही बात. नहीं. शुभम एक चीज बोला. क्या? अरे यार नहीं बोल सकता ना मैं. मत बोलना, मत बोल भाई, मत बोल. बैगन मैसेज कर, जीत सकता है ये. बता दे. अबे बट अब तो हो गया, वर्डिक्ट आएगा अब तो भाई, वो डाल देगा. तुमने फाइनल स्टेटमेंट दे दिया तुमने? हाँ दे दिया. फाइनल स्टेटमेंट दिया, लॉयर मांग लेता यार, एक दिन का टाइम मांग. पागल है क्या? बस ठीक है, कोई नहीं. लेट इट तुमको बाद बी में यार, खत्म करना, क्यों बढ़ाना है? अरे यही कौन तो इतना देखना है, बहस, ऐसे public. 10 घंटे कौन बैठेगा भाई? चल बे पागल है, चल मार. हो जाएगा, होने दे, जो हो रहा है होने दे, इतना डरता नहीं हूँ मैं, ठीक है? मैंने तो बोला भाई, ना पैसों का डर है ना उसका है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे. चल मार. एक कुछ भी नहीं पूछा. चल मारना, मैंने ज्यादा पूछा ही नहीं. क्या पूछूं उससे, छोड़ना. तू गधे था, गधा है मतलब. हाँ मैं गधा हूँ, कभी लड़ा ही नहीं, केस तो कैसे पता होगा? कभी एक्सपीरियंस ही नहीं है, कभी आया ही नहीं, तो कैसे पता होगा भाई? बोलने दे सर. आजा इधर, Everyone be seated, please. आजा, राशि को जाने दो. जा मम्मी के पास, गेट खुला हुआ है. Alright, so the first verdict would be for Miss Mastani, then we'll come to Mr. Shenoy. On the charges of burglary and on the charges of reckless evading. Burglary, see, I would say they were inside the house, but they were not found with a probable cause inside the house, as per the law that is required upon the Constitution. So, for the charge of burglary, Miss Mastani is found not guilty. Okay. And for the charge of reckless evading, Miss Mastani is found not guilty. Okay. Again, because the court चल believes भाई, that दो charges there was drop. no probable cause इसके तो हो during the गए. situation, and as per the statement that she shouted to the officers, that she was in medical help, as well as because this was a complicated situation, of course. But she had to save her life, and both of their stories matched, and as well as officers were not able to provide proof otherwise for this particular statement to be changed. So for these two particular charges, Mastani has been found not guilty. And coming on to Mr. Shenoy. Just a second. मेरे को लग रहा है पूरा, मेरे को लग रहा है अब तो. Possession of controlled substance B. Mr. Shenoy is found guilty. ये ले.
for this particular charge. Moving on to the second charge, that is burglary. The court finds Mr. Shenoy not guilty चलो भाई on हो the गया charge drop. of possession of items of a crime. The court finds Mr. Shenoy not guilty on false reporting. पूरा There भाई was only very less. It was only a hearsay conversation on the based upon false reporting charge. So it has to be. It's not admissible. Basically, it's hearsay. It's a very vague conversation that had happened between the officers, and there is no particular paper trail, or not paper trail, but there is no record of it. एक रिपोर्ट एक के लिए लगाया guilty, बाकी false reporting भी गया. On the charge of Burglary possession भी of गया. controlled substance P, the court finds Mr. Shenoy guilty, and the rest of the charges are to be dropped. And on this charge, I would ask the police officers to give Mr. Shenoy a fine and community service of 20 months. Alright, sir. Officers approach and Mr. Shenoy as well. Officer Jake. हाँ बोलो सर. Mr. Shenoy. Yes, sir. Yeah, see, all right, let's have a talk in my chamber, sir. Yeah. Okay. Yeah. The court is adjourned, guys. चलो भाई कोई नहीं we'll 30 move महीने with की the- जेल लेके मस्तानी को तो we'll move with वो कर the दिया हमने. बस एक चार्ज कोई नहीं गाइस कर move लेंगे with 30 the- महीने की जेल ले what do you लेंगे say, कोई the दिक्कत नहीं charges है that is being भाई आने दो found guilty सिस्टम forward, but there will be no jail time. It will be just be community service. All right. And all the Community charges service. have been found not guilty besides one charge. Alright. Alright. तो सिस्टम actually होगा भाई जो मुझे सिस्टम. fine दिया गया था वो सब compensate करेंगे क्या ये ऑफिस? Yes, yes, yes. It will be returned. Miss Mastani, yeah, एक second, Miss Mastani and आप शिनाई को भी बुला लीजिए. चलो अच्छा सर, शिनाई अंदर ही है, हाँ आप जी, अंदर जी. आ जाओ. Yeah, come inside, come inside. See, Jake, the evidences you had was on the right track, but the only problem is your officers did not see them rob anything inside the house. You could have pressed trespassing charge at the very least, or because your officers didn't see them actually robbing something. Am I correct? I'm okay with the burglary charge being Yeah. dropped. I'm not okay with any Yeah. other charge being dropped. I'll be Mhm. very honest, but okay, that's up to you. Which charge are you specifically saying for that? All the other, I'm okay with burglary charge being dropped. I'm not okay with any other charge being dropped. I think they are guilty charges, but that's okay. That's your call. See, yeah, because to be honest, there is no record of any other evidence. It's just on-scene evidences, right? So, Not really, but I respect your decision, and I do not Yeah. want to override your decision. So I'm not going to mention anything. But yeah, that's up to you. all right. So on the charge of possession, you can fine him and you can give him 20 months of community service. What kind of community service would I give him? Just get him cleaned, like what do you say, PD, whatever you want, like in community service, you know. Okay. Yeah, it's up to you. I want compensation. You can get your fine back, but for a Sir, I just compensation, I wanted think to I will ask ask the one more state thing. to give you guys Sir, around. actually, Yeah, how much was your fine? Both of your fines was. Sir, I didn't pay the fine, but I gave the bail amount of Yeah, around how much was 40 that? 14,000. 3250. Yeah, that will be returned to you. Okay. And And sir, my bail amount was around 14,250. 14,250. Yeah. All right, no worries. I will give that back to you. Okay. Alright. I have your bail amount with me. Alright. And Officer Jake, I will ask you to give both of their fines back. Just charge him with this fine, which the court has found guilty him in. Yes, I would require the state to provide me the funds for that, sir. Yeah. Just ask your chief to provide you the funds from that, you know. So the fines directly go to the state, sir. Uh-huh, What yeah, need you yeah. to help me out with that? I will probably need to contact state for that, I guess. Yeah. Is Mr. Adi around? I'm not sure, sir. Let me give him a call. Eddie? जा मम्मी के पास चले जाओ तो छोड़िए मम्मी जा जा भाई कभी अवेलेबल ही नहीं होता है तो
चलो ठीक है. Anyways, you guys will get 10,000 each compensation from state. All right. Alright, sir. Besides your for Yeah. the trouble you went through and System. for the fines, you will get back your fines. And जो अभी आप जो charge के लिए आप Mr. Shenoy plead guilty, like जो आपका verdict आया कि as guilty for that substance charge. हाँ All जी right. सर, हाँ जी, हाँ जी. I want you to be honest and actually help us to provide information on that. Okay. Will you do that? Yeah, sure, I can. All right. All right. Mr. Jake, I want you to interrogate Mr. Shenoy on the substance that you found on him. Okay. Sir, actually, we already did that, and he already mentioned how he got it, sir. Okay. He mentioned it was from the microwave of the house, sir. Yeah, that's fine. But so he said that in Anyways. court under oath. Mhm. So I would take that as his testimony for that. That's how he got it. Yeah, that's why he's getting community service for 20 months. Yeah. no? So further investigating on how he got that would result in the same thing because he did say that under oath. Mhm. Well, and I want you to investigate one more thing actually. Just give me a second. About these lockpicks. See, I So would have already yeah, investigated, sir. We already have a conclusion to that, sir. Yeah. And it's been through every case that has gone out. Yeah, that is fine. That is a conclusion. Okay, that's like you have to make a proper report regarding that. What you can say the classified report or whatever. You should have made that and put it into evidence for me to consider that it is being used in every scenario. Well, that's okay, sir. It's okay, fine. Yeah. Anyways, I hope you guys. So just the thing is that there are yeah. there are a lot of evidence reports coming, a lot of classified Mhm. information comes Mhm. in. Reporting each and everything would become hectic because of the crime rate almost being Yeah. doubled as of now. So if me Yeah, not having system. classified information reports in place will cause criminals to roam around the streets, then that won't be my blame. No, I understand what you're saying. Okay, but the lockpick thing is like very, for the court to believe it, you have to prove it, right? That's for you to. That's for you. That's for you to Yeah. decide, sir. Not for me to decide. Yeah. That's what I'm saying. See, if you would have made even like a small report, like a brief report, that would have been the charge would have been guilty on that. So I mean, with all the other work I have, I understand. having I understand. 24 hours to actually file the case and have all documentation in place. I do not blame you. For Not that. being a lawyer myself, so it's okay. It's fine. If you have that type of consideration, then it's okay. No, that type of consideration is not the point. Okay, I understand what you do. I'm not blaming you for that. Okay, I'm just saying you to be a little more specific in the reports. Like for the investigation reports. You know what I mean? Yeah, so we are into that. Yeah, we have an investigation. I'll be honest, Your Honor, we have investigation reports about a lot of things, but we have those reports have just been seen and not actioned very much. So if from the chief side we get that type of a thing where the reports take time to be actioned, it keeps our police force also thinking भाई that they should story have तो done. थी भाई Yeah, story तो थी And So that is one thing from your end as well, sir. Yeah. If you definitely need my assistance, I'm open to that. So can we go now? Yeah, and you guys can reach out to state. Should we get them to talk to state or about their compensation? So that would be ideally them and between you because that is nowhere of me being involved because their funding is not with me, nor is their compensation with me. Yep. So I will ask you guys to reach out the state for your compensation, 10,000 each. Okay. All right, sir. And Ajay, you can ask your chief to give them back their fines. And charge them with appropriate fines. So again, as mentioned, वो state देगा सर. नहीं अच्छा वो भी state देगा क्या? I thought that goes into PD like fund or something. Ideally, जो भी fines लेते हैं हम, that state would have access to. Yeah. Okay. No worries. ठीक है. Thank you. Alright, sir. We'll do all this later. All right, about the fines and all. You Yeah, guys yeah. will get it back. Okay. I will once have a word with SSP chief as well. Okay. Sure. Yeah. All right. No worries. You can go. All right. About the community service, Jake Williams, sir, I have to. हाँ, आ जाओ. Jake, you can assign one officer for that. No, I'll only help it out. Yeah. All right, sir. Yeah. Let's go. Let's go, boys.
Just next time, if you are in any trouble, do on 911, Mr. Sure, sir, Shenoy. sure. Like if I you're will. like someone is trying to stab you or whatever, just trying to do on 911. Alright. It's your first offense, so I believe you. Yeah. I believe both of your stories matched, and so that's the reason I decided to let you go off the hook. I get it, sir. Yeah, I hope you improve yourself as well. Yep, sir. Yes. Yeah, just no worries. Alright, sir. Thank you. Shenoy, I would ask you to just come here and raise your hands because Yeah. I have to process you. Yeah, sure. Now just face the wall and raise your hands. You're going to be going for the cuffs. You have the right to remain silent. Anything you say cannot be used against you in the court of law. You have right to an attorney. If you cannot afford one will be provided to you by the state of available. Do you understand your rights? Yes, sir. Yes, you can take him to community Vespucci PD and give him some community service. Yep. Yeah. Thank you, sir. Easy. Let's go. जी covered with Hopeless for to you, hopeful. just, हाँ भाई. मज़ा ही आ गया भाई. Next level भाई. मज़ा ही आ गया. Full on. मज़ा ही आ गया. स्टोरी तो थी बेटा. स्टोरी तो बनाई थी तेरा भाई. सर आपकी कार कहाँ पे है? लेफ्ट में आके. ऑलराइट. अच्छा ये वाली है. ठीक है. हंस रहा है ये भी हंस रहा है भाई. 0.5 to 90%. सही में भाई ने सही में. बैठा देता आपको. ठीक है. हाँ जी सर बैठा दो. और सर मेरे को ना कुछ पीने के लिए भी दे देना एक बारी ना वहीं पीडी पे जाके. ठीक. सर मैं 2 मिनट कुछ सोच लूँ. हाँ सोचो. ठीक है. रुको वैसे 1 सेकंड में आया मैं. आई विल बी बैक इन 1 सेकंड. जी let's have a meeting tomorrow. Okay. Regarding what, sir? Regarding a law session mostly. Okay. The things like probable cause and all that. Because it's in the constitution as well. So I feel like it was not in this scenario. Only the reckless. You were focusing on like his story more rather than. I'm back, guys. I'm back. I am not a lawyer, sir. I know, which is why I want to conduct a law session for you guys. Sir, actually, I would want another DA to be appointed for us. Yeah, because a law session, like I told you in the court as well, crime rates have been increasing. The active situations. If Shobham would actually even tell you, while I was talking in the front, there were multiple 90s happening. One just happened at Vinewood Hills, I mean. And I do not know if officers would have time for a law session. We would require a DA on board to help us with such cases. More than a law session. See, the law session is just to get you guys more knowledge about the law, and I will definitely try to appoint one DA because we definitely need one. So so once we have a DA on board, then we can look into that because I would want to take care of crime first. Definitely. All right, no worries. Take care. Yeah, you guys have a good day. Yeah. मतलब जज ये कह रहे थे कि एक घर से बाहर निकलो पर बाबल कॉज नहीं है. अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. जज ने जो बोल दिया. हाँ वैसे 390 हो गए. बताओ 390 हो गए. एक पीढ़ी के बाजू में हो रहा है, एक हारमोनी पे हो गए जो लोग करके भाग गए, और एक उससे पहले ग्रू स्ट्रीट पे हो रहा था. अरे जज को बोल दो यार 90 हो रहा है, स्टोर के बाहर आ रहे हैं, मे बी इनोसेंट. From 0. अभी इसको एमडीटी अपडेट करनी है. क्या करना है? करनी है क्या एमडीटी अपडेट करनी है. मैं कहता हूँ वो अपडेट कर. हाँ एक मैं देखो लाइन भेजता हूँ, वो अपडेट कर ले एट द एंड ऑफ दैट. ठीक है. एक्चुअली नहीं, मैं इसके लिए फ्रेश एमडीटी बनाता हूँ. ठीक है. डोंट वरी अबाउट इट, मैं करता ही है.
मेरा भी नीड होगा। ना ना ना, आई टेक एफर्ट। ठीक। सर मेरे को एक बात और पूछनी थी जी फिल्म सर। बोलो बोलो। मैंने ना गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था एंड ना वो वो कैंसिल हो गया था बिकॉज ये कोर्ट केस के चक्कर में। एंड मेरी बात हुई थी जज से, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपके चार्जेस ड्रॉप होते हैं तो यू विल गेट इट। आ जाओ। तो मेरे को उसके बारे में अपडेट पूछना था वो कि अभी के लिए तो नहीं मिलेगा, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम बिकॉज Okay. एक चार्ज लग रहा है ना, लाइक अभी भी एक चार्ज लग रहा है। हाँ वही बिकॉज ऑफ दैट अगर वो एक चार्ज नहीं लगता तो शायद से Alright. मैं जज को बोल देता वुड हैव गिवन इट टू यू, आई वुडंट हैव एन इशू। समझा। तो मैं मेरे को एक बार charge के उससे लिए बात मेरे को करता हूँ। एक बार हाँ जज सर से बात करके देख लो कि लाइक वो पूछ रहे थे, अगर तब भी वो कहते कि नहीं देना तो देन इट्स फाइन, अगर वो कहते कि दे देना तो फिर आप मेरे को बता देना। ओके। I'll just search you once. Yeah. Give me like 2 to 3 minutes. हाँ जी सर, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई चैट कौन कह रहा था भाई स्टोरी खराब है? मैं तो बोल रहा था स्टोरी तो बेटा बढ़िया है, स्टोरी तो बनाई है ना बढ़िया सिस्टम से। लेकिन भाई अब एक चीज़ है, अगर मैं अब पकड़ा जाता हूँ ना कभी भी, तो ये लोग वो भी सेम क्राइम्स के लिए, तो ये लोग मेरे को अंदर ही कर देंगे। अब उसके बाद मेरे को प्लीड गिल्टी ही करना पड़ेगा। अगर मैं प्लीड गिल्टी नहीं करता तो मेरे पे बहुत तगड़ा ही वो लगने वाला है। फ़ोन भी ले लिया? फ़ोन तो है मेरे पास, फ़ोन तो चला सकते हैं हम। बन जाने के बाद कोई हाउस नहीं करेगा, ऑब्वियसली कोई भी नहीं करेगा, बहुत ही कम लोग करेंगे हाउस हो गया। अभी भी लाइक टायर 3 जाने के लिए करते हैं, उसमें वो सब सामान मिलता है। करना पड़ेगा ना गन्स के लिए, हाँ ना वही ना, टायर 3 वाले भी गन के लिए, हाँ वही मतलब वही है यार, वही बात है, एक ही बात है। मज़ा तो आ गया भाई, आज फुल मस्त मौज हो गई भाई। क्या बोल रहा है ये? सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, लिख रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। और रिफंड आएगा भाई अपना, बढ़िया सा सिस्टम हो जाएगा बढ़िया। सर मेरे को भी दे दो ना कुछ पीने के लिए, मेरे को भी बहुत प्यास लग रही है। हाँ Give me 1 sec.
आ जाओ। यस सर। हाँ जी सर। आपसे कुछ लिया था मैंने? फ्लैश लाइट ली थी सर। फ्लैश लाइट लिया था ना? हाँ जी हाँ जी। ये लीजिए। ओके। एंड और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस you're free to go. Alright, no community service? Nah, I changed my mind. Thank you sir. No worries. ओ भाई, ओ भाई, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया भाई। अरे जरा पिक Yes. करना यार, जरा ये पीडी से पिक कर लेते जरा। भाग गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑफिसर ने बोला कि आई चेंज माय माइंड, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, आ जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ ओके। आ जा पिक कर। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आ जा। हाँ भाई, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया, फुल ऑन मस्त हो गया आज तो, मस्त मज़ा आ गया। तुम्हें मिस भी नहीं करती हो। तुम्हें मिस भी नहीं करती। हाँ। चलो बारूद भाई इधर आओ। बारूद भाई, तुमने उस दिन बोला ना कि लाइसेंस इशू करना शुरू हो गया, क्या सीन? रुको क्या बात है? अंदर हो जा। हेलो बारूद सर, कैसी हो? अंदर हो जा। सब पहचान जाते हैं और हम आपको नहीं पहचान पाते, अच्छा नहीं लगता ऐसा। मस्तानी हूँ मैं, मस्तानी। अरे मस्तानी जी, अरे बताओ, कॉन्ग्रेचुलेशन आप तो फर्स्ट एंड हमारे फॉर पुराने दोस्त हो। जी, बताओ। लेकिन आप हेलमेट पहनिए ना, थोड़ा नहीं पहचान पाते हम। वो हेलमेट थोड़ा पहनिए। सेफ्टी लेके चलते हैं ना हम, कहीं वही कार तो, में गाड़ी मेरे के अंदर सेफ्टी, वही बात है अरे ना। वो सर टकरा जाता है ना स्टीयरिंग से। तो जानू से देखा था मैं। प्राइमरी में मैं बगल में बैठा था जब आप गाड़ी चला रहे थे ना, प्राइमरी जब चला रहे थे, बोलो। छोड़ दो सर, छोड़ दो। आरुषि जी, बोलो। जैसे कि हम केस यहाँ पे जीतते हुए हैं, अभी मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरा थोड़ा सामान वामान दे दी थी। तुम कहाँ पर हो? कोर्ट केस क्या हो गया? जीत गए, कॉम्पेंसेशन मिल रहा है 10,000 का। अच्छा। और क्या वे जॉर्डम। अंदर हो जा। हाँ ना, क्या अंदर हो जा। मैं चला रहा हूँ ना गाड़ी। बाकी कांग्रेचुलेशन सर, आपने अपना मेरी ड्राइविंग पे तुम्हें भरोसा नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी ड्राइविंग पे नहीं है भरोसा। कम सेट नहीं। चलो बारूद सर, मिलते हैं, सिया। अरे अंदर हो ना, अंदर हो। बारूद सर, अरे अंदर ही तो है वो। अरे बारूद, ये बताओ ना, कर कौन सी लड़की, वो जो लड़की को हक करे, तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, रहा नहीं चाहता, तड़पती ऐसी है। काम नहीं, वो बोली कि आप मेरे को देख लोगे, मेरे पास गोली चलनी है, तो उसने हाथ ऊपर किया। अब मैंने सुना नहीं, मैं गले में ली, बराबर। और फिर मैं बोल गया मैं कोर्ट में हूँ, माफ करो। मौका थोड़ी छोड़ते हैं। कोई बात नहीं। हेलो गाइस, हार गए। रे केस जीत गया तुम्हारा भाई। हाँ भाई, 10,000 कॉम्पेंसेशन और सारे चार्जेस ड्रॉप। ओह तेन सही है भाई, मजा ही आ गया। और बेल अमाउंट जो दिया था इनको 15,000, वो भी वापस रिफंड। सही है। ये बताओ, 10,000 कॉम्पेंसेशन। हाँ, ये बताओ कि क्या नाम है तुम्हारा, केस कौन लड़ रहा था? अबे मैं ही लड़ रहा था। बताओ। हाँ भाई, तुम जीत लॉयर गए किधर है? भाई। लॉयर भाई नहीं आया, लॉयर सो रहा है लॉयर।
अगेंस्ट में कौन था? वो ऑफिसर जेक विलियम्स। हाँ भाई बोल रहा हूँ ना, ट्रैफिक पुलिस है, उससे ना होगा केस। भाई थोड़ा मैंने बढ़िया shocking था ना। पॉइंट्स दिए थे भाई, कहीं आई तो मीन बढ़िया शेनॉय थे ने जेक विलियम्स को हरा दिया, बस खत्म भाई। अब खत्म हो गया भाई, अंदर से खत्म हो भाई। गया भाई, अंदर से खत्म भाई। ओ भाई How about we get a ticket to another planet maybe? भाई मजा ही आ गया भाई, फुल मजा आ गया भाई आज तो। लिटिल सोल आओ, लिटिल सोल। I'm doing oxy right now. हाँ बस अरे अंदर हो ना, चलना। जाऊंगी। सही है आप तो एकदम। मैं पैदल ही चला। अगर आप रहे वहाँ तो। इधर है तो अभी। ओए वॉरियर। ये मेरे से पूछ रहे क्या या बॉर्डर से पूछ रहे? चल रही है, एटीट्यूड था। चल ना, तब से मैं बोल रहा हूँ, कि बुला मैं रहे drive हैं सब करूंगी, लोग। ये कौन सी नौटंकी? नहीं तुम नहीं ड्राइव करोगे, आई डोंट ट्रस्ट योर ड्राइविंग एट ऑल फ्रॉम नाउ। शट अप बेटा थैंक यू बोलो पहले तो तुम, और वो जो 10,000 आएंगे ना वो मेरे को देना, मेरे को वापस। अच्छा जो मैंने जेल काटे थे और तुम नहीं वो काटे, वो जो जेल तूने अपनी मर्जी से काटी है, वो तूने अपनी मर्जी से काटी है। अबे चाबी यार ना। मैंने तो तुम पे भरोसा किया था ना। एक सेकंड, क्या भरोसा? वो तूने अपनी मर्जी से काटी थी, मैंने तेरे को बोला था, मैंने तेरे को पहले ही बोला था नहीं कि तू क्या मतलब सक्सेसफुल रॉबरी करा के देगा। अबे नूट, अच्छा मेरे को ये बात बता, मैंने तेरे को नहीं, इट डजंट मैटर, नहीं तू लोकल से पिटा हूं मैं भाई। अच्छा जरा एक बारी अकेले करके दिखाइयो, मान जाऊंगा। चल अकेले जो अकेले कर नहीं सकते ना वो तो नहीं बोले, तो मैं चुप रहे ना तो उनके लिए ज्यादा बेटर है, नहीं तो तोड़ा जाएगा गंदे तरीके से। ठीक है ओके ठीक। अकेले कर नहीं सकती, मेरे को सिखानी चली है। अबे यार मजाक कर रहा हूँ, अबे वो सब छोड़, तू 10,000 ना मेरे को ट्रांसफर करियो, मैंने लेड़ा है पूरा केस अकेले बैठ के अपनी ऐसी तैसी कराई है। लॉयर को तो मैं इतना, लॉयर से तो रिफंड लूंगा पैसे। मैं सुनना अगर मैं बोल देती ना कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अपना जेल काट के आ गई हूँ, हाँ, या मैंने किया है, सॉरी मैंने प्लीड गिल्टी किया है और मैंने सच में चोरी की थी और मैंने अपना जेल भी काट लिया, तो वहाँ तो गलती से फ्री में तू छूट के भी नहीं आता। ठीक है, एक तो साथ देने गई, वहाँ रिस्क खा के मैं वापस से जेल काट सकती। नहीं तू अपने दोस्त को ऐसे ब्लैकमेल करेगी, मतलब ठीक है यार। नहीं यार बज रहा है ना, मेरे आगे बजियो मत। बता देना। अरे वाह, तुमने तो नेकलेस सीन से लिए, अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी बच्चों की बातें नहीं सुनते हम। हाँ मैं क्या कह रहा था यार, रख ले यार तू 10,000 रख, और तेरे को तेरे फाइन के पैसे भी दोबारा वापस मिल तो रहे यार, क्यों टेंशन ले रही है तू? तो ठीक भाई है ना, मैं वापस चाहिए तेरे को। ओह माय गॉड भाई, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता भाई कि जीत गए भाई। मेरे से बज रहा है भाई, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता भाई। पता मेरे अंदर क्या जाके बोला है? पता है ना, मेरे को बुलाया था जज ने अकेले। क्या बोल रहा था? उसने मेरे को बोला कि आर यू श्योर कि आप बोल रही हैं कि आप स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी जब आपने प्लीड गिल्टी किया? मैंने बोला आई एम डेफिनेटली श्योर सर, हमने कुछ नहीं किया है। तो आर यू श्योर अगर आपको फिर से डबल जेल हो सकती है इसके चक्कर में कि आपने स्टेटमेंट चेंज किया, प्लस जितने आपने क्राइम किए हैं उसके साथ में। मैंने बोला ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं अभी भी स्टेटमेंट पे हूँ। दैट टाइम मैं अनकॉन्शियस थी एंड काफी मुझे पेन हो रहा था एंड दैट ऑफिसर यार वो अलग किस्म का है, कहते क्या अलग ही है भाई। चेकअप कराया मैंने कहा, एक तो मैं ट्रीट होके आई तो लेकिन तू पता है, लेकिन तू बोल सकती थी, लेकिन तू ना वो भी उस चीज में बोल सकती थी कि हाँ मैंने चेकअप कराया ना अगले दिन जाके। उस टाइम पे डॉक्टर नहीं थे, मैंने अच्छे चेकअप कराया। वैसे मेरे पास कुछ था नहीं, वैसे फिटबिट ही था। अरे वही फिर भी मेरे से बोला ना उसने फिटबिट के लिए, तो मैंने क्या बोला, वही बोला मैंने, वो जॉगिंग पे जाता हूँ, एक हाथ में पहनता हूँ एक पाँव में पहनता हूँ। भाई स्टेप्स काउंट करने के लिए पाँव में पहनता हूँ, एक्यूरेट स्टेप्स चाहिए होते हैं। ओ भाई मजा ही आ गया भाई मजा तो बहुत आया, माँ कसम नेक्स्ट लेवल मजा आया भाई मेरे को तो, नेक्स्ट लेवल। रुक जाओ, मेरे को आरुषि से ना जरा अपना सामान लेने दे, तब से रख के बैठी हुई है पागल की बच्ची। क्या सीन अब?
कोई सीन नहीं। बोलो ना पुलिस पीछे है, बाद अरे में फोन करो। अच्छा पुलिस पीछे है, फोन काटो फोन काटो। ठीक है ओ काट रहा हूँ ना। हाँ क्या कह रही तुम? क्या क्या सीन है? अभी मैं 3-4 दिन कुछ नहीं करने वाला, घर आराम से बैठूंगा मैं अब। भाई मैं ये सोच रहा हूँ, अगर सोच हम बाय चांस फिर से पकड़े गए, ठीक है, सपोज हम पकड़े गए, ठीक है, एंड अब की बारी मैं नॉट प्लीड गिल्टी करता हूँ, जज भी सेम होता है, ठीक है। अब की बारी क्या बहाना दूंगा? कितनी बारी ये एक ही बारी काम करा है बस, अगली बारी कुछ भी नहीं काम करेगा, वो कहेगा सीधा अंदर है भाई, आई डोंट बिलीव इन यू भाई, तो दोबारा आ गया। क्या हो गया? अब आगे से बनेगा? अब आगे से अंदर ही मुंह जाऊंगा। से बस गुंडा बनेगा क्या? है बेटा, जितवा दिया ना केस, मजाक नहीं है, करके दिखा। इतनी हंसी ये आ रही थी स्टोरी ना मेरे को। अबे डजंट मैटर, ये स्टोरी वो मान गया, लेकिन देख ले माइक्रोवेव में ऑक्सी थी, तू बोल देता उन्हीं चोरों ने रखी होगी माइक्रोवेव में ऑक्सी, मुझे क्या पता। अबे मैं ठीक तो है ना, उस बेहोश हो टाइम पे गया जो था, मैंने समझा तो वो देखा ही बता नहीं। दिया, उस टाइम पे जो समझा और बता रही दिया, बात कोई वो फर्क नहीं पड़ता। वो वाली मेटल वाली बात कि टॉर्च जो है मेटल का है, हाँ मतलब हार्मफुल होता है, तो बोलो फोन भी तो मेटल का होता है। अरे नहीं यार, वो बात ही नहीं है, वो मैंने बोल तो दिया था इस बारे में कि माय लॉर्ड, ठीक है। वो टॉर्च लाइट मारने के लिए यूज होती है, कब से यूज होने लगी उसमें, वही है, छोड़ो कोई नहीं, नेवर माइंड। मिलेंगे ना पैसे स्टेट से, पूरे पैसे लूंगा आप, 10-10 हज़ार पूरे, 10 हज़ार तेरे को मिलने चाहिए, 10 हज़ार मेरे को, कॉम्पनसेशन निकालो भाई, बहुत टाइम वेस्ट किया तुम लोगों ने हमारा। क्या करना है भाई फिर? अब मैं सोने जा रहा हूँ थोड़ा। हाँ जा। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो कुछ करो ना फिर। क्या करना है? जो मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम कुछ करो ना फिर, अगर कुछ नहीं कर रही तो। मैं कर लूंगी, देख लूंगी। क्या कर लूंगी? आगे जो करना होगा। क्या करोगी? तू जाना सोने। जाऊंगा ना, तो अभी जाऊं? क्यों भेजना चाह तुमने रही ही है? तो बोला यार, क्या ही बंदा है। वो तेरे को बोलना चाहिए, क्या करेगा जाके, रुक जा। अच्छा ऐसा? तूने बोला नहीं बोला ना, ठीक है अब जा रहा हूँ, छोड़। ऐसा बोलना चाहिए, जाने वाले को किसने रोका है? ठीक है भाई, जा रहा हूँ हमेशा के लिए। जी हमेशा के लिए? हमेशा के लिए, यस, कभी दोबारा नहीं दिखूंगा, बाय। मजे ले ली भाई, फुल ऑन। चलो सी या गाइस, विल सी यू सून एवरीवन इन अनदर स्ट्रीम, जो कि होगी आई गेस काफ़ी टाइम बाद, अब पेपर्स आ रहे क्योंकि, तो मिलते हैं गाइस, टाटा एवरीवन, बाय बाय।